रिकॉर्डिंग कर दी पास कर दो। नहीं ये
ये मैडम डॉक्टर फरहत है अभी इनको अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कल जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर फरहत और डॉक्टर शरीफ आई कैन सी योर screen, but I would like you to please on the video so that I can have an interaction with you. And we warmly welcome all the participants of today's session, as well as our Professor Rahat Sarfraz. She is the mentor of today's activity. And Assalamu alaikum. And also welcome to Dr. Niazi, Dr. Suhail Niazi. रिकॉर्डिंग को एक मिनट बंद कीजिएगा रिकॉर्डिंग एक मिनट बंद कर Thank you very much, Dr. Sharif. I can see you. Dr. Farhat, recording बंद है ना? अभी आपने रिकॉर्ड stop video participant chat sections. आवाज नहीं आ रही है कौन सा बात करेगा आगे करते हैं Assalamu alaikum. Dr. Saira has already introduced me. My name is Dr. Rahat Sarfraz. The topic of my presentation today is an abstract. How to write it, how to look at it. So I think all people who are sitting here or who are listening to us, everybody knows what an abstract is, because everybody is either a writer or an author or a reviewer or editor. ठीक है? So आप क्या आप समझते हैं abstract से? What is? Anybody else wants to add something? खुलासा बिल्कुल सही है उर्दू में इसको खुलासा कहते हैं. Yes, I know that every one of you know my purpose is just to brush up or to align our knowledge which we already have with special addition of structured and unstructured abstract and summary of a review article. Now the learning objectives of today's presentation is what is an abstract, definition, proper definition, what are the characteristic qualities of an abstract, with purpose or significance of an abstract, why we write an abstract, who writes it, who is the best person to write it, what things should be included, that is do's and don'ts of an abstract, what should not be included in abstract. Because आप medical editors, you are going to become medical editors. तो आप जब edit करेंगे तो आपको पता होगा कि abstract में आपको क्या चीजें required हैं और क्या नहीं required हैं. And then types of abstracts, structured versus unstructured abstracts, and summary of a review article, or again it's an abstract, but there is a misconception that for some type of research articles we don't write an abstract, but even for review articles, for systematic reviews, for meta-analysis, you write an abstract, you have to submit an abstract. So the word abstract actually is derived from the Latin word abstractum, which means that it's a condensed form of a longer piece of writing. So what an abstract is. जैसे आपने कहा कि खुलासा है. It's a self-contained, short and powerful summary that describes the focus of a larger research project. Self-contained means that it is complete within itself. ठीक है? It does not require something else. अगर आप it highlights key concepts, research purpose, importance of Burns' work, and outcomes. Usually placed at the beginning
but as you all know that it is written at the end of research. Most of in research projects जो आप करते हैं सबसे आखिर में आप abstract लिखते हैं, सबसे पहले आपने वो काम किया होता है. It is one thing to make clear is that it is an original document rather than cut and paste. आप उधर से नहीं उठाते हैं, आप अपने words में इसको लिखते हैं, and it is not a review, nor does it evaluates the work. It is not an evaluation, but it should present an exact image of the content. Basically, ये एक snapshot है आपके जो काम आपने किया, जो आप present करना चाह रहे हैं उसकी, ठीक है? Next, please. When it is written, when it is required, ठीक है? कहाँ पे चाहिए होता है हमें? आप सबको पता है, while submitting an article to the journal, especially online journals, और इसमें every type of article, case report, case series, आपके ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल, जैसे मैंने आपको कहा, रिव्यूज, सिस्टमैटिक रिव्यूज, मेटा एनालिसिस, नॉर्मली दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एडिटोरियल्स, कमेंट्रीज और लेटर्स टू एड, उनके लिए नहीं चाहिए होते, अदरवाइज रिक्वायर्ड. अप्लाइंग फॉर रिसर्च ग्रांट्स, आपने जो रिसर्च करनी है उसके लिए रिसर्च ग्रांट के लिए यू हैव टू गिव एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू. राइटिंग अ बुक प्रपोजल, कंप्लीटिंग डिसर्टेशंस, एमए, पीएचडी थीसिस, उसके शुरू में आप लिखते हैं. Writing proposal for a conference paper and writing a proposal for a book chapter. ठीक है? And who writes it? कौन लिखता है? Researcher itself. He is the best person. But sometimes for books and some other big documents, you hire a person जो technically expert होता है, and it writes. That person writes it for you. What is the significance of or purpose of an abstract? फायदा क्या है इसका? क्यों लिखते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट? अदरवाइज तो मैं एक आर्टिकल एज इट इज भी पब्लिश कर सकती हूँ ना. क्या इसका फायदा क्या? इट्स अ स्नैपशॉट. हाँ, और ये कि ये चीज आपके पढ़ने की बर्थ है, मैं इसके अलावा बाकी सारे में 4 सफ़े पढ़ूं या ना पढ़ूं. इज इट रिक्वायर्ड फॉर मी और नॉट? इट इज रिलेटेड टू मी और नॉट? इफ इट इज ऑफ सिग्निफिकेंस टू मी और नॉट? सो for selection, for indexing and for communication. आप जब डालते हैं इंडेक्स में ये वर्ड्स हैं, because selection में to persuade the reader to see the full text. ठीक है? आपका इतना इंटरेस्टिंग सा एब्स्ट्रैक्ट है कि उसका दिल चाह रहा है, बेशक उससे रिलेटेड नहीं भी है, कि वो ये पढ़े. बहुत टाइम पे हम साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं, मगर हम क्वालिटेटिव स्टडीज भी पढ़ लेते हैं बिकॉज हमें वो इंटरेस्टिंग लगती है. To help readers decide the relevance of an article for their own purpose, कि मेरे लिए रिलेटेड है कि नहीं है. जैसे हम रेफरेंसेस डालते हैं या साइट करते हैं तो हमारे लिए रिलेटेड है या नहीं है. Should I go for the whole article, और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट में मैंने रिजेक्ट कर दिया कि ये आर्टिकल मेरे काम का नहीं है. For indexing, abstract should contain keywords and phrases that allow easy searching. अभी हम देखेंगे, गौर से हमेशा देखते हैं लेकिन शायद हम ओवरलुक कर देते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट के बाद कीवर्ड्स लिखे होते हैं. that are used for indexing, which can be used by many online databases for indexing larger works. For communication, of course, for communication, it helps to communicate spreading of knowledge. Communicate करता है ये abstract से हमें to key findings to those who do not have time to read the whole article. Even those people know the key findings. To answer a call for paper in a conference, या आप खुद कोई काम करना चाह रहे हैं, you can build up your knowledge on that abstract. So what should be the qualities of an abstract? Being an editor, जब आपने देखना है कि आपके पास एक abstract आया तो उसमें आपको क्या qualities चाहिए, क्या आपने देखनी है, उसमें आपके लिए क्या जरूरी है. ठीक है? Number 1 is accuracy. Number 2 is brevity, clarity, uniqueness, authority, language, and formatting, of course. Accuracy means a good abstract includes only information included in the original document. आपने कोई दाएं बाएं की चीज नहीं लिखनी, जो कुछ आपने नीचे आर्टिकल में लिखा है वही आपने से मतलब ये कि जो आप चेक भी कर रहे हैं उसने वही लिखा हो जो उसके आर्टिकल में. ठीक है? Clarity होनी चाहिए, no ambiguity. Quality of being coherence and intelligently written. Uniqueness, something unique should be there.
कोई ऐसी चीज, कोई रेपिटेशन, कोई आपको पता है कि ये चीज हुई भी है, वो उसका कोई फायदा नहीं है. The people who study your abstract must know that this study is interesting and offer something new. आप तभी वो पढ़ेंगे ना आगे जब आपको लगेगा कि इसके अंदर कोई ऐसी मजे की चीज है, कोई मेरे काम की चीज है, कोई इंटरेस्ट है. Authority. The writer should have complete authority. कि quality is good, everything which is explained is authentic. Authenticity is very important. Language mostly English, मगर Chinese, Japanese जो भी आप करें फिर आप उसके लिए. Formatting is important. Title आप हमेशा abstract से ऊपर title होता है at the top of the page, upper and lower right case letters में लिखा जाता है. Then layout usually 1 to 2 paragraphs with word limit होती है इसकी 50 to 300. ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्पेल के साथ. उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड में आपके होते हैं वर्ड काउंट. It presents usually at the beginning of a research, जैसे हमने बताया, but can be placed elsewhere, for example in book of abstracts or online, कहीं भी आप रख तो सकते हैं. Font size should be different from the main text. अच्छा, अब इसकी लेंथ पे अगर हम बात करें तो यूजुअली पेपर्स एंड आर्टिकल्स, जैसे कहा कि वर्ड लिमिट 50 to 300 तक होती है, बट पेपर एंड आर्टिकल्स यूजुअली 250 वर्ड्स, और कम्युनिकेशन का शॉर्ट कम्युनिकेशंस 100 वर्ड्स. लेटर्स टू द एडिटर्स इफ यू गिव एन एब्स्ट्रैक्ट 30 वर्ड्स, और लार्जर डॉक्यूमेंट्स और रिव्यूज, सिस्टमैटिक रिव्यूज के लिए आप 300 वर्ड्स तक यूज कर सकते हैं. बट अगेन रिमेंबर वन थिंग कि एवरी जर्नल गिव्स its own word limit as well. So आपने जिस जर्नल में अपना आर्टिकल सबमिट कराना है या जो जर्नल के आप एडिटर हैं, आप उसके प्लान के अकॉर्डिंगली इसका वर्ड लिमिट जो है वो सेट करते हैं कि हमारे में इतनी, इस चीज के लिए इतना चाहिए. अगर आप ये वाली चीज सबमिट करें तो आप इतने वर्ड्स यूज करें. टेंसेस यूजुअली, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एवरीथिंग, आपने कहा कि स्नैपशॉट है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सो बैकग्राउंड इज यूजुअली इन प्रेजेंट टेंस. प्रिंसिपल एक्टिविटी, दैट इज जब हम एम्स ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, उनके लिए आप पास्ट प्रेजेंट कोई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ स्टडी क्या है. बट मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस ऑलवेज इन पास्ट टेंस एंड कंक्लूजन इन प्रेजेंट टेंस. कि मैंने ये सोचा, दिस इज माय कंक्लूजन, इट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस. सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट टेंसेज एज वेल. सो जो कुछ हमने भी कहा, क्वालिटीज, this is very important. 4 C's अगर आप याद रखें, complete, it should be complete, it should be concise, it should be clear, and it should be cohesive. That is, it covers the major parts of your project, but every segment of your project. Concise होना चाहिए, wordiness, unnecessary wordiness, बहुत flowery language इस तरह से नहीं use करनी चाहिए. Clear होना चाहिए, well organized, and cohesive. Flow, smooth flow होना चाहिए. What to include, that is do's क्या होते हैं इसके, ठीक है, क्या कुछ इसमें होना चाहिए. Components of an abstract, this is very important. Whether it is a structured object, abstract or unstructured object, abstract, these things should be there. First is the problem, that is what is the purpose of the research, objective research, आप इसे कोई भी नाम दे दें, प्रॉब्लम कर दें, पर्पस कर दें, ऑब्जेक्टिव कर दें, रिसर्च क्वेश्चन कर दें, फोकस ऑफ स्टडी कर दें. This should be included. Then the sample population size characteristics, ठीक है, जिसको हम methodology कहते हैं. वो वही आ गए ना जो आपने, सॉरी ये देखें, प्रॉब्लम, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चन, फोकस, इसको डिफरेंट नाम देते हैं ना, तो ये सब का मतलब वही है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. बेसिकली कुछ जो होते हैं उनमें आप बैकग्राउंड का नाम दे देते हैं इसको, उस बैकग्राउंड के अंदर आप थोड़ा सा अपना वो लिखते हैं मेन का, और साथ आप अपना ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं. देन सैंपल पॉपुलेशन, दैट इज आपकी, फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी कि आपने किस मेथड से किया, ठीक है, आपने डाटा गैदरिंग का प्रोसीजर क्या था, इंटरवेंशन क्या थी, रिसर्च डिजाइन आपका क्या था, किस टाइप की स्टडी थी, क्रॉस सेक्शनल थी, मतलब जो भी आपका है, कोहॉर्ट है, मतलब जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है आपने लिखना है. देन रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स, साइंटिफिक जब आप लिखते हैं राइटिंग तो उसमें सारे आप डाटा देते हैं, क्वालिटेटिव के अंदर आप अपना डिस्क्राइब करते हैं, वो आप डिपेंड करता है. देन कंक्लूजन्स, इम्प्लीकेशंस और रिकमेंडेशन, ठीक है.
So basically these 5 things should be included in every type of abstract, whether it is a structured abstract or unstructured abstract. So again, to put in simple, हम क्या कहते हैं कि author ने क्या किया, what the author did, how the author did it, what the author found, and what the author concluded. So this is the main crux जो भी हमने बात की कि ये do's जरूरी है कि उसने क्या किया, कैसे किया, और क्या उसको मिला, और उसके बाद उसने क्या उससे नतीजा निकाला. What not should not be included, that is don't be important हैं, जो चीजें नहीं होनी चाहिए एक abstract में while you are checking or while you are writing. Do not add information not contained in the original work. हमने पहले कहा कि जो original work से बाहर नहीं आपने निकलना. दूसरी बात, do not define terms. Abstract में terms define नहीं करते, references add नहीं करते, trade names, acronyms, abbreviations, symbols add नहीं करते. No tables or figures are added. Preferably, it should not commence with कि this paper, this report or similar sentence. इस तरह नहीं शुरू होनी चाहिए. Should not use sentences that end in is described as, is reported as, is analyzed as. Title should not be repeated or rephrased. आपने दोबारा abstract में title नहीं लिखना. The abstract should be about the research. It's not about the act of writing. आपने research को अच्छे तरीके से, comprehensive तरीके से, इस तरीके से कि आपका आर्टिकल पढ़े बगैर ही वो इतना अच्छा लगे कि आप उसको पढ़ना चाहें या एक्सेप्ट करना चाहें. नहीं, टाइटल तो आपने वैसे लिख दिया, दोबारा आपने एब्स्ट्रैक्ट की जब हेडिंग है उसके नीचे टाइटल नहीं लिखना. हम एब्स्ट्रैक्ट पे फोकस करें ना, तो एब्स्ट्रैक्ट के नीचे नहीं आपने ये एग्जैक्टली इट डिपेंड्स. कुछ उसको नाम कर देते हैं बैकग्राउंड का. एग्जैक्ट ये आपको ना अकॉर्डिंग टू जर्नल आपको वेरी करना पड़ता है, बिकॉज अब मोस्ट कुछ जर्नल्स अब ये सिर्फ कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स लिखें, बस वहां से स्टार्ट करें, बाकी सब चीजें लिखनी है आपने लेकिन ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं. कुछ जर्नल्स का ये है कि वो बैकग्राउंड, उसमें ये होता है कि आप लिखते हैं कि मेरा ये टॉपिक है और ये मैंने इसलिए चूज किया, थोड़े से 2 लाइनें लिखें, और एम ऑफ माई स्टडी इन दिस फील्ड इज दिस. तो डिपेंड्स के आपकी जर्नल की रिक्वायरमेंट क्या है. मैंने आपसे कहा क्वालिटेटिव में तो आपने सिर्फ वैसे ही बता देना है ना. ये तो डिपेंड करता है कि आपकी साइंटिफिक रिसर्च है, किस टाइप की रिसर्च है, टाइप ऑफ रिसर्च पे डिपेंड करता है. आपने रिजल्ट्स बताने, आप पी वैल्यू हर एक में तो नहीं आप बताते, ठीक है ना. सो वो आपकी डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स. आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी टाइप ऑफ रिसर्च पे डिपेंड करेंगे, लेकिन वो आपने बताने हैं. अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी बहुत. सो एब्स्ट्रैक्ट्स बेसिकली आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ एन आर्टिकल. ये बात दिमाग से निकाल दें. ये should not be cited as references. References इसीलिए हम कहते हैं कि full text reference जो होता है वो आर्टिकल का आप दें. This is not a summary of the entire article. It should present main findings. जैसे आप वही मैंने कहा कि स्नैपशॉट है, आप पहले दिखाते हैं ना कि ये मैं इट्स बेसिकली आप ये कह लें कि समराइजेज योर वर्क. आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको कि ये मेरी चीज है, ये छोटी सी, आप इसको देख लें और फिर उसके बाद आगे चलें. सो इट्स नॉट it presents just the main finding. It do not contain enough information for a critical evaluation of the research. ये भी नहीं हो सकता कि इसकी बेस पे आप critical evaluation कर लें. Not fully और most of the abstracts are not fully peer reviewed. मैडम को भी पता ही है. 60% are never followed by a complete scientific article. जैसे आप कॉन्फ्रेंसेस के लिए भेजते हो, दूसरी जगहों के लिए भेजते हो, उसके बाद जरूरी तो नहीं कि हर एक के साथ आर्टिकल भी आपने लिखा हो. बहुत सारों के साथ नहीं बाद में आर्टिकल आप लिखते. So basically it's an outline, but it should be complete. अब abstract और introduction को बाज़ दफ़ा confuse करते हैं, मगर abstract जो है it gives an overview of the key points from the whole document. पूरी जो document है आपकी उसका करता है. And includes aim, materials, methods, result, discussion, conclusion. जैसे हमने अभी कहा, इसमें कोई reference
मैम की आवाज नहीं आ रही, स्पीकर अनम्यूटेड म्यूट हुआ हुआ है। अच्छा, जो अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर उन्होंने फाइंड आउट किया कि कंक्लूजन का पार्ट अक्सर मिस हो जाता है या रिकमेंडेशंस का पार्ट, ठीक है। सो इट इज रिटन इन अ पैराग्राफ फॉर्म बट द और इसमें ये जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं दे आर नॉट लेबल्ड लाइक स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट्स बट दे शुड बी देयर। उसके बाद जर्नल इन विच वन इज ऑफ कोर्स इज प्लानिंग टू सबमिट वर्क विल टेल यू द हेडिंग्स टू यूज। जैसे आपने कहा था, मैंने कहा कोई बैकग्राउंड यूज करा देता है, कोई ऑब्जेक्टिव्स का वर्ड यूज कर देता है। अब वो जो शुरू में हमने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए ना कि उसमें डूज में क्या क्या होना चाहिए, तो वो उसका यही मतलब था। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एम्स, तो एम्स का बहुत डिफरेंट उसकी वैरायटी ऑफ वर्ड्स एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर एम्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब वो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर उस करते हैं। पर्पस ऑफ द स्टडी लिखते हैं, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखते हैं, एम्स लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, कुछ भी आप करते हैं। फोकस ऑफ द स्टडी जैसे आपने उसमें किया। फिर ये यूजुअली स्ट्रक्चर्ड ऑब्स्ट्रैक्ट जैसे प्रेफरेबल, मैडम ने जैसे कहा कि हमने कहा है अपने उसमें एनल्स के अंदर कि आपके जो ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स हैं दे शुड बी फॉलोड बाय अ स्ट्रक्चर्ड, और वो जो है वो साइंटिफिक हैं और इंफॉर्मेटिव। जैसे मैंने आपसे कहा इंफॉर्मेटिव जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट्स, दे आर क्विकर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स इसमें कंप्लायंस अच्छी होती है, आपको समझ आ जाती है, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड जैसे कहा कि रिटन इन अ पैराग्राफ फॉर्म बट दे शुड फॉलो द पैटर्न आइडियली। दे डोंट हैव एनी टाइटल स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, सो ऑथर कैन ओमिट एक्सीडेंटली और पर्पसफुली सम पार्ट्स। सो दिस इज द ड्रॉबैक आप कह लें इस वाले टाइप का एब्स्ट्रैक्ट का है। जाहिर है डेफिनेटली आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जहाँ हेडिंग्स होती हैं वो आसान नहीं हो जाता ये ऊपर नीचे। अभी हम देखते हैं ना इसमें, सॉरी ये एक्सक्यूज मी, अच्छा हाँ this is the first page of an article having an abstract. Sorry वो असल में ना, excuse me, ये ना वो नहीं, वो उनके लिए मैंने इसमें डाले हुए हैं। मतलब बेसिकली वो इसमें समझाना था, मैंने कहा शायद आप लोगों को सही तरह से दूर होते ना बाज़ दफा तो पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने प्रिंट करा लिए थे। जैसे ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। अब इसमें उन्होंने एम्स ऑब्जेक्ट कोई भी वर्ड नहीं यूज है, पर्पस यूज किया हुआ है, ठीक है। देन डिजाइन मेथोडोलॉजी अप्रोच की हुई है और उसको 3 डिफरेंट हेडिंग्स दी हुई हैं। फाइंडिंग्स दैट इज रिजल्ट्स, ओरिजिनलिटी, वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, और कीवर्ड्स पे दिए हुए हैं, और पेपर टाइप तक उन्होंने बताया कि इट्स अ रिसर्च पे टाइप। अनस्ट्रक्चर्ड में अब देखें इसके अंदर ये ये जो सबसे पहले आपके पास ऊपर होगा शायद, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट, अ डिफरेंट लुक एट इरानियन जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब इसका जो है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट बट इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, मगर ये आपको खुद हाईलाइट करने। जैसे इसमें लिखा हुआ है द प्रेजेंट स्टडी एम्स टू इन्वेस्टिगेट द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट, सो दिस इज द एम इस जर्नल का, इस आर्टिकल का। अब आपको इससे पता चला कि इस आर्टिकल में ये एम है। अच्छा, दिस सर्वे यूजेस अ कंटेंट एनालिसिस मेथड, सो मेथडोलॉजी आ गई आपकी कि उन्होंने क्या किया इसके अंदर। उन्होंने ये किया कि डाटा वाज कलेक्टेड थ्रू स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ये जर्नल्स थे जिनसे डाटा कलेक्ट किया, सो ये उनकी मेथडोलॉजी आ गई। देन ईच पब्लिकेशन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ 4 रीसेंट इश्यूज, ये भी उनका पार्ट ऑफ जैसे उन्होंने रिजल्ट्स बनाए तो किस तरह से उन्होंने किए एवेलुएट। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ करंट स्टडी इट सीम्स दैट अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, सो दिस इज देयर कंक्लूजन, दिस इज देयर रिजल्ट, दिस इज देयर रिकमेंडेशन। सो मतलब रिकमेंडेशन तो नहीं, उनका कंक्लूजन ये था। सो लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपको ये सब कुछ खुद मार्क करना पड़ा, ठीक।
एब्स्ट्रैक्टिंग लाइब्रेरी वो तो खैर उसके कीवर्ड्स हैं जिससे आप कीवर्ड्स जो होते हैं दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वन वर्ड अबाउट कीवर्ड्स के ये 4 से 5 हो सकते हैं। अगेन आपका जर्नल आपको बताता है कि आप कितने कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। यूजुअली वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करते हैं और वो करते हैं जो आप उसमें जो मैश में या उसके टर्म्स जो होती हैं दे आर प्रेफरेबल कि इंडेक्सिंग के लिए अगर आप डालें तो उसके से आपके वो निकल आए। अगेन आपका ये नेक्स्ट है शायद राइटिंग अ केस रिपोर्ट। अगेन दिस इज एन अनस्ट्रक्चर्ड। मैंने जरा अनस्ट्रक्चर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसाइज इसलिए किया कि ये एक उन्होंने कहा कि किस तरह आपको केस रिपोर्ट लिखनी चाहिए और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि इट्स अ डिस्क्रिप्शन। अब इसके अंदर यही है कि उन्होंने शुरू में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया कि केस रिपोर्ट क्या होती है। इट्स अ सिंगल केस विद यूनिक फीचर्स और हमने उसमें ये किया कि हमने डिफरेंट केस रिपोर्ट्स देखी और केस रिपोर्ट्स शुड अब फिर उसके बाद उसका उनका जो रिजल्ट था शुड बी शॉर्ट एंड फोकस्ड विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ फिगर्स एंड रेफरेंसेस। और कंक्लूजन था कि स्ट्रक्चर ऑफ केस रिपोर्ट यूजुअली कंप्राइजेस ये और ये उनका आ गया मगर ये आपने ढूंढा, ठीक है। और इसमें से ये कि मे बी सम पार्ट इज मिस्ड आउट सम, हाँ जब आप उसको एनालाइज करें क्रिटिकली तो कोई एलिमेंट मिस हो बिकॉज आपने एडिटर्स एज एन एडिटर यू विल चेक अदर पीपल्स आर्टिकल्स, उनमें आप एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले देखेंगे। सो डोंट टेक इट लाइटली कि ये एब्स्ट्रैक्ट है इसका तो मसला कोई नहीं है, ये तो बस हम इग्नोर कर देते हैं, इसको बाकी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नहीं, आपका मेन फोकस ये होना चाहिए अगर एब्स्ट्रैक्ट सही है उसमें वो सब क्वालिटीज हैं तो दैट शुड लीड यू टू आइदर रीड द होल आर्ट। वो तो ज़रा आपने चलें आपकी मॉरल ड्यूटी आपने पढ़नी है कि वेदर यू वांट टू हैव दैट आर्टिकल इन योर जर्नल और नॉट, वेदर इट इज इन कंप्लायंस विद योर जर्नल और नॉट, ठीक है। तो फिर इसलिए समरी फॉर रिव्यू आर्टिकल, ये मैंने जैसे कहा कि मैडम ने कहा था कि बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है तो ये आप इंक्लूड करें। इवन रिव्यू आर्टिकल जो आप लिखते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यू लिखते हैं, मेटा एनालिसिस लिखते हैं, उसके अंदर भी आपको एब्स्ट्रैक्ट चाहिए और सब स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, अगेन अनस्ट्रक्चर्ड। दिस इज अगेन अ स्ट्रक्चर्ड, ये भी आपके पास है मेरा ख्याल है, ये थर्ड आपका कि इसमें आप देखें इसमें इसने डिफरेंट टर्म यूज किया, पर्पस की बजाय ऑब्जेक्टिव कर दिया, स्टडी डिजाइन कर दिया, प्लेस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टडी कर दिया, मेथोडोलॉजी कर दिया, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, ठीक है। सो अगेन इसने मेथोडोलॉजी, ये सिस्टमैटिक रिव्यूज, रिव्यू सिंपल रिव्यू है, दिस इज नॉट मेटा एनालिसिस, दिस इज नॉट मेटा एनालिसिस, दिस इज सिस्टमैटिक रिव्यू, सिस्टमैटिक इट्स अ सिंपल रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। हाँ, उसने फिर अपनी टेक्निक्स बताई हैं। अगेन दिस इज अ रिव्यू आर्टिकल जिसमें आपका ये आर्टिकल जो है अब इसका अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट, बट इट इज अ रिव्यू आर्टिकल, सो इट मस्ट बी, इट मे बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द जर्नल कि आप इसका अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे मैडम ने कहा हमारे आपका शायद अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट है फॉर रिव्यू आर्टिकल्स। सो अगेन मगर इसमें यह कि आपने ढूंढा कि एम क्या था, इसकी मैथोडोलॉजी क्या थी, ये मेडलाइन ये बेस सबसे उन्होंने ढूंढे आर्टिकल्स, फिर उनका ओपिनियन क्या था, अब उसमें उन्होंने कंक्लूजन में ओपिनियन का वर्ड यूज कर दिया। अगेन अ सिस्टमैटिक रिव्यू, ये भी इसका आप देखें इसी तरह है कि सारा उन्होंने अपना अलग अलग स्ट्रक्चर्ड है। मैं तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स के लिए बात, हाँ जो हाँ नहीं इसलिए मैं, हाँ इनको ये नहीं पता चल रहा कि रिव्यू और सिस्टमैटिक रिव्यू में क्या डिफरेंस, इवन मेटा एनालिसिस डिफरेंट, बट मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि इनके लिए भी आपको यू शुड हैव एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर ओरिजिनल आर्टिकल्स, फॉर रिव्यू आर्टिकल्स, क्योंकि रिव्यू में आपको लगता है ना कि आपने काम तो नहीं किया, आपने लिटरेचर सर्च किया, सो मे बी इट डज नॉट रिक्वायर एन एब्स्ट्रैक्ट, नो इट रिक्वायर्स एन एब्स्ट्रैक्ट। इसमें भी आपका जरूरी है कि कंक्लूजन क्या था, फिर ही एक्सेप्ट होगा रिव्यू आर्टिकल। सिस्टमैटिक रिव्यू में भी यही है, मेटा एनालिसिस में भी यही है कि वो आपने वो आपका जैसे कहते हैं ना ऑनलाइन काम या बैठ के काम करने वाला है, सो इट डज नॉट, उसमें तो आप कोई ऐसी रिसर्च नहीं करते ना। सो बट अगेन वो उसका आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि उसके लिए आपको रिव्यू, आपको एब्स्ट्रैक्ट चाहिए। अब एब्स्ट्रैक्ट्स क्यों एक्सेप्ट नहीं होते, अब ये इतना कुछ पढ़ के हमें वैसे ही पता चल जाता है क्यों नहीं एक्सेप्ट होते। जब फॉर एग्जांपल हम कहीं भेजते हैं और हम एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट, हमारी कोई भी चीज ना अगर पसंद की जाए तो हमें कितना बुरा लगता है, मतलब वैसी बुरी सी फीलिंग आती है, तो व्हाई आर नॉट एक्सेप्टेड, क्यों नहीं होते, मिसिंग हो सकते हैं।
देयर इज लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, सबसे बड़ी बात है आपके टॉपिक में। जैसे हमने कहा कि यूनिक अथॉरिटेटिव अच्छा टॉपिक होना चाहिए, कोई उसमें नॉवेल्टी नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है। आपने एब्स्ट्रैक्ट से ही देख लिया कि ये चीज तो इतनी मतलब हो चुकी भी है, या कहीं से पुअर प्रेजेंटेशन है, आपके वर्ड्स डिसकोहेरेंट हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी नहीं है, पुअर मेथड्स हैं जिनको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज नॉट गुड, इनएडिक्वेट रिजल्ट्स हैं। आप बेशक आप 3 लाइनों में दे रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट में रिजल्ट्स, बट दे शुड बी कोहेरेंट, दे शुड बी कंप्लीट, जो आपका बात समझाएं, और वीक डिस्कशन। सो टेक होम मैसेज क्या बना हमारा? द एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ एन आर्टिकल। It is written at the end of an article, but it should be an eye catcher. और इसका है ये कि it makes the, इसको आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि it should be the best part of an article. While you are writing an article, make sure that it stands alone, that is, it is complete within itself. ठीक है? और double check every piece of the data. इसको आप रिवाइज रिवाइज रिवाइज, इसमें ये जो आर 2 दफा लिखा ना, ये गलती से नहीं लिखा, ये इसलिए है कि दिस शुड बी रिमेम्बर्ड दैट इट शुड बी डबल चेक्ड, रिवाइज्ड। बार बार आप अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है आफ्टर राइटिंग द आर्टिकल चेक करें कि वो उसके साथ कोहेरेंट है, वो कितना इंस्पायर करता है ऑडियंस को, रीडर्स को, लोगों को, कि आप कि ये चीज शुड बी इंक्लूडेड इन द जर्नल, इन द कॉन्फ्रेंस, इन द पेपर, कहीं भी आपकी चीज चली जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दीज आर द रेफरेंस आर्टिकल्स। 1-2 शायद मैंने आपके साथ वो पहले पेजेस शेयर भी किए हैं, जस्ट वो एब्स्ट्रैक्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू आर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर सायरा साथ, if you want to add on, Dr. अच्छा, डेली का रिफ्लेक्शन लिखना, और वो मैडम को ईमेल करते थे। हमारा तो उसमें ये था कि फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन में जो डेली एक्टिविटी आपकी होती है, वो गिब्स साइकिल जो है आपका रिफ्लेक्टिव साइकिल है। सो बेसिकली इट्स अ रिफ्लेक्शन कि आपने सारे दिन में क्या किया, और आपको भी याद रहता है। और उसमें ये कि आप सारा जो आपका है वो आपने इवनिंग में मैडम को ईमेल करना है डेली। वैसे मुझे नहीं पता कल वालों ने किया कि नहीं किया, हमारी तो ये प्रैक्टिस थी कि हम वो करते थे। फिर उसके बाद उसका आपने प्रिंट आउट लेके अपने पोर्टफोलियो में जो पार्ट, और ये जो आपकी प्रेजेंटेशंस हैं या जो भी आपको इसके बाद मैडम असाइनमेंट्स देंगी, वो उसके अंदर पोर्टफोलियो का पार्ट होगा आपका। और जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जैसे आपने जो किया, वो फिर ये कि आपको भी याद रहेगा, और उसके ऊपर ये कि आप यू कैन ऐड अप थिंग्स ऑन दैट। अच्छा, नहीं, मैं आपको दिखा दूंगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो मैं ले आऊंगी, कल ले आऊंगी। अभी कल है ना इनकी वर्कशॉप, मैं मतलब वो उसका कोई नहीं है, वो किसी का भी आप देख लें, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया था वो। बस ये कि उसको आप देखे उसकी वैसा आप करें। नहीं, मैं कल ले आऊंगी, वो ये कि वो आपको देख के पता चल जाएगा, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बस सिर्फ ये कि ये जो आपने डेली किया, ये गिब्स साइकिल की हेडिंग्स करके उसके साथ आपको नहीं, और उसका आपको फायदा भी है वैसे मैं बताऊं, बिकॉज ये कि जब आप कराएंगे तो यू नो हाउ टू डू इट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। जी सॉरी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ये जो मैडम ने आपको स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट की हैंड दिए, इसमें जो सॉफ्ट कॉपीज थी वो प्रेजेंट भी की हैं, और जो लोग हमारे साथ यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं, आप सबको मैं ये दूंगी, आप लोगों को फोटो स्टेट
इन ये लोगों की खुद ड्यूटी है कि ये अपने इसकी हार्ड कॉपी निकालें प्रिंट की और अपने पोर्टफोलियोज में इसको पेस्ट करें एज ए प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसमें आपने करना क्या है, पहली बात ये, हमने दो तरह के एब्स्ट्रैक्ट आज डिस्कस किए हैं, वन इज स्ट्रक्चर्ड एंड द अदर इज अनस्ट्रक्चर्ड। नाउ हमने कल बात ये की थी कि पॉलिसी ऑफ द जर्नल के मुताबिक हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमने कौन सा चूज करना है। अगर पॉलिसी है स्ट्रक्चर्ड की तो हमने उसकी कुछ हेडिंग्स देखनी है और वो वहां पर होनी चाहिए, और अगर अनस्ट्रक्चर्ड की हैं तो देयर वुड बी नो हेडिंग और वो उसमें तमाम चीजें पैराग्राफ्स में होंगी लेकिन उसके तमाम कंटेंट्स मौजूद होंगे, राइट। और कीवर्ड्स, दैट इज द ओनली हेडिंग जो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों में होती है। कीवर्ड्स मैश ओरिएंटेड होंगे। आप जब एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है, यू हैव टू मेक योर कमेंट कि ये एम लिखा हुआ है, नेक्स्ट इज अबाउट द डेटा कलेक्शन, थर्ड इज मेथोडोलॉजी, राइट, मेथोडोलॉजी में आएगा डेटा कलेक्शन। हाँ, आपने इसको हाईलाइट करना है अपनी फाइल में, राइट, हर कंपोनेंट को और अनस्ट्रक्चर्ड में, और इन द एंड आपने बताना है कि कीवर्ड्स की टोटल कितने और इसके टोटल वर्ड्स कितने। ये तीन चीजें आपने इसमें देनी है। फर्स्ट कि अनस्ट्रक्चर्ड में कंपोनेंट्स हाईलाइट करने, सेकेंड कीवर्ड्स मैश ओरिएंटेड जो है वो उनकी काउंट क्या है, और वर्ड काउंट क्या है उसमें। वर्ड काउंट में कह रही हूँ, आई एम नॉट इंक्लूडिंग prepositions, ठीक है। सेकेंड, कीवर्ड इज ऑलवेज mesh terms है medical subject headings. ME comes from medical, S for subject, H for headings. mesh keywords अगर आप गूगल सर्च बार में टाइप करें आपके पास keywords आ जाएंगे। Your keywords should be in mesh, वो होने चाहिए। उसकी वजह क्या है, कीवर्ड्स इसकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। अगर किसी ने आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो सर्च करना है तो वो कुछ उसमें वर्ड्स डालेगा, राइट, गूगल स्कॉलर पे या डेटाबेसेस है जितने भी उनमें, या सर्च इंजन है, दोनों में फर्क है, डेटाबेसेस और सर्च इंजन। सर्च इंजन आर गूगल है, गूगल स्कॉलर है, दे आर सर्टेन डेटाबेसेस हैं, NLM की डेटाबेस है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल साइंसेज, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है वो आपको पता है यूएस में है। NLM दैट इज द मेडिकल लाइब्रेरी, उसमें सारे मेडिकल की रिसर्च आर्टिकल्स है। थर्ड इज अगर पाकिस्तान क्या लेना है तो पाक मेडिनेट, अगेन अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ मेडिकल जर्नल्स। उसमें जो आपने पिक करना है जर्नल दैट इज थ्रू कीवर्ड्स, ठीक। आप कीवर्ड्स टाइप करेंगे तो उससे वो रेलेवेंट सर्च करके आपको दे देगा। whenever you are reviewing an article या आपको एडिट करें आर्टिकल तो आप ये देखना चाहते हैं कि ऑलरेडी इस पे क्या काम हुआ है, हाउ इनोवेटिव इज दिस टॉपिक इज, और जो इन्होंने आपके साथ अपना रैशनल डिस्कस किया है इज इट ऑल राइट, इसकी जो स्ट्रेंथ्स है लिमिटेशंस हैं आप उससे सेटिस्फाइड हैं एज एडिटर, तो आप मैश ओरिएंटेड कीवर्ड यूज करेंगे तो आपको सर्च होगी, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्च ऑल दोज आर्टिकल्स, ठीक है। तो मैश कीवर्ड्स होने चाहिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्ड का, अनस्ट्रक्चर्ड का, सॉरी। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर्ड। मोस्ट ऑफ द जर्नल्स दे हैव देयर डिफाइंड हेडिंग्स फॉर द स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट, राइट। आपने अगर स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो फर्स्ट आपने ये नोट करना है कि इन्होंने अपनी जो हेडिंग यूज की हैं इनमें से कितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि इन्होंने यहाँ पर उसमें हेडिंग्स में कवर कर ली है, राइट। और अगर आप इसमें समझते हैं कि नहीं, एक कमेंट आप जरूर दें कि इसमें ये चीज भी ऐड होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर इन मेथोडोलॉजी मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड हेडिंग्स डोंट काउंट सेटिंग्स नहीं उसमें अमूमन होती। Yes, they would ask you about the study design, they would ask you about the data collection procedure, about data analysis or statistical analysis, and there is a separate heading for the results, right? लेकिन मेथोडोलॉजी में सेटिंग्स की बहुत जगहों पर जरूरत नहीं होती। जो आपको दिया जा रहा है, क्या आप समझते हैं इसमें सेटिंग्स अगर होती तो इसकी वैलिडिटी इंक्रीज हो जाती और हमें बेहतर तौर पर समझ आती कि ये आगे हमें पढ़ना है एज एडिटर या नहीं। दूसरा,
आपने उसमें एब्स्ट्रैक्ट के वर्ड्स और कीवर्ड्स, राइट, ये चूंकि ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं दोनों, तो ये इसमें काफी अच्छा काम हुआ है। एक मैं आपसे शेयर करूंगी अभी जो कि अनपब्लिश्ड है, जिसे हमने रिजेक्ट किया हुआ है। उसका एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर आपने खुल के कमेंट्स देने हैं, क्रिटिसाइज करना है, राइट, बिकॉज दैट एब्स्ट्रैक्ट वुड नॉट बी अप टू द स्टैंडर्ड। तो मैं आप ये दो तो आपको जो मैडम ने दिए हैं, दे आर वेरी गुड एब्स्ट्रैक्ट्स, और इससे आपको आइडिया होगा कि स्टैंडर्ड क्या है। और एक आप वो करेंगे जो कि स्टैंडर्ड पे नहीं है, एंड देन यू वुड नो कि क्या गलतियां लोग करते हैं एंड हाउ द थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड। हमारे पास जितनी भी सबमिशंस आती हैं, मुझे अक्सर कहा जाता है कि मैडम आप हमें फौरन बता दिया करें कि रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। इट इज़ वेरी इजी जॉब। अगर एडिटर ने सिर्फ क्रॉस और टिक करना है ना, इट इज़ वेरी इजी। मैं उन्हें बार बार कहती हूँ कि ये अगर हम आपको टाइम के बाद रिजेक्ट कर रहे हैं आफ्टर 3 मंथ्स, हमने आपको बार बार एक ऑप्शन दी है, इम्प्रूव योर सेल्फ, इसे बेहतर कर लें, इसे एक कमेंट्स भी दिए हैं कि ये चीजें इम्प्रूव कर लें। अदरवाइज ये तो एक नजर में देख के पता चल जाता है कि इट हैज टू बी रिजेक्टेड। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस स्टेज पर हैं ओवर द इयर्स कि हमारे पास क्वांटिटी का कोई मसला नहीं। क्वांटिटी अगर अगले 5 साल में भी हमारे पास इतनी सबमिशन हैं कि अगर 5 साल में एक भी सबमिशन नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू सस्टेन दिस जर्नल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्वांटिटी इज नॉट एन इशू। इशू क्या है? क्वालिटी। अगर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए डॉक्टर न्याजी या मैडम राहत या आप में से कोई कमेंट दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जीज दे रहे हैं जस्ट टू इम्प्रूव समवन एल्स वर्क, उस पर मेरा नाम तो नहीं लिखा हुआ आना, डॉक्टर न्याजी ने रिव्यू किया उनका नाम तो लिखा हुआ नहीं आना, मैडम राहत का नाम तो नहीं लिखा जाएगा। क्रेडिट किसको मिल रहा है? ऑथर को। और ऑथर आर वेरी रिलक्टेंट टू रिवाइज इट। और फिर जब एक दफा, 2 दफा, 3 दफा के बाद नहीं रिवाइज करते, आफ्टर 3 गिविंग देम क्योंकि 3 दफा चांस दिया जा रहा है, हर एक को दिया जा रहा है। और 3 दफा चांस का मतलब ये कि हमारा वर्कलोड 3 गुना बढ़ गया। जिस टाइम में हम बाकी आर्टिकल्स को देख सकते थे, हम वो टाइम भी उनको दे रहे हैं। और फिर रिजेक्ट करते हैं, फिर वो कहते हैं जी टाइम, इतने टाइम के बाद हमें क्यों बताया? इतने टाइम के बाद आपको टाइम दिया है टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ। नाउ देयर इज अ लिमिट, तो अब उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज जस्ट बाय लुकिंग एट द एब्स्ट्रैक्ट you would see editor can decide, very well they can decide कि मैंने इसको पब्लिश करना है या नहीं करना, क्या ये वर्थ है इसकी या नहीं है, राइट। तो आपका जो काम है वो एब्स्ट्रैक्ट की वजह से बहुत अच्छा हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर राहत, आपने बड़ा जबरदस्त हमें आज एब्स्ट्रैक्ट का सारा बताया। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे आपने असाइनमेंट दी थी कि आपने एक नया मेडिकल डिवाइस बनाना है, तो क्या वो भी हमने पोर्टफोलियो में लगाना है या ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट? नहीं, कल वाली जो आपकी असाइनमेंट है जिसमें आपने प्रेजेंट किया था, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर कर लूंगी लिंक जैसे मेरे से शेयर होता है। सेकंड, उसका भी आपने जो आपके कमेंट्स थे, हमने आपसे प्रेजेंटेशन का जो आपने उस दिन प्रेजेंट किया था, यू हैव टू प्लेस इन द पोर्टफोलियो इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रुप, क्योंकि वो ग्रुप में किया था तो आपने एज ए ग्रुप आपने उसमें पेस्ट करना है। और कोई बात? गिव साइकिल मैंने आपसे कर लिया रिफ्लेक्शन का, उसके अंदर ये है कि देयर आर सर्टेन हेडिंग्स, आपने उस हेडिंग को सिर्फ आंसर करते जाएं। एब्स्ट्रैक्ट में आपको ये समझ आ गई है कि एब्स्ट्रैक्ट में कुछ हेडिंग्स नहीं, आपने सिर्फ उसके रेलेवेंट चीजें अंदर रखनी थी। इसी तरह रिफ्लेक्शन में यू हैव द हेडिंग, यू जस्ट हैव टू पुट द योर फीलिंग्स, योर एक्शन पॉइंट्स इन इट, एंड देन योर रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेशन इज रेडी। कल 2 सेशंस हुए हैं और आज, तो आज आप लोग उसको अपने पोर्टफोलियो में लिख लें। बाकी आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, सर मैडम ने कहा है असाइनमेंट्स हम आपको देंगे, एंड जो लास्ट डे है ना उसमें एक एक से मैं डिस्कस करूंगी बैठकर। दैट इज व्हाई आई वांट एवरीवन टू बी प्रेजेंट फिजिकली हियर इन द लास्ट सेशन। तो असाइनमेंट्स आपको काफी टाइम मिलेगा। वी वुड गिव, लास्ट टाइम तो हमने टाइम दिया था और उसके बाद रिक्वेस्ट आ गई कि मैडम प्लीज डेडलाइन जो है वो 1 हफ्ता आगे कर दें, और 1 हफ्ता हमने फिर मार्जिन दे दिया। लेकिन दिस टाइम मैं आपको पहले दिन ही बता रही हूँ, सेकेंड डे सॉरी, there would be no extension of the deadline। तो टाइम शुरू में लगता है बहुत है, और जब आप एंड पे पहुंचते हैं ना तब अंदाजा होता है कि नहीं काम बहुत ज्यादा है और टाइम कम है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जिस दिन आपका सेशन खत्म हो तो थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा भी रोज का अगर आप अपने असाइनमेंट को दे दें, दैट वुड बी एनफ।
आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि एक दिन में बैठ के मैं सारी असाइनमेंट कर लूंगा या एक हफ्ते में बैठ के कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू सर्च सर्टन थिंग्स। उसके लिए आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, आपको उसमें थोड़ी एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, और आपकी अपनी लर्निंग है। इन द एंड हु वुड बी द बेटर पर्सन, हु वुड बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो आपने खुद इसका लेना है। क्रेडिट भी आपको ही जाता है, फायदा भी आपको ही जाता है। इन द एंड सर्टिफिकेट डजंट मीन एनीथिंग। अगर मैं कहूँगी जी मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट, और मेरी पर्सनालिटी में, मेरे काम में उसका कोई आपको रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता, तो वो आप मुझे क्या उसका ग्रेड देंगे, है ना। तो मैंने बहुत से लोगों को इतनी अच्छी बातचीत करते हुए और इतना अच्छा काम करते हुए देखा कि आई हैव टू आस्क देम कि ये आपने कहाँ से सीखा है, फ्रॉम वेयर यू हैव लर्नड इट, है ना। तो कुछ लोग इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो ये सर्टिफिकेशंस और ये तमाम चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वट एवर वी आर डूइंग, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड व्हेन व्हाइल वी आर डूइंग आवर वर्क, एंड दैट वुड बी माय विश टू, मेरी ख्वाहिश भी यही है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन और? मैंने तो अपनी तमाम स्लाइड्स कर दी थी, और मेरी तमाम स्लाइड्स आपके साथ ग्रुप में शेयर हो चुकी हैं। वो आपने उसको पढ़े भी, उसका प्रिंट भी लें, और आपके पोर्टफोलियो में वो एज सच लगेंगी। डॉक्टर जाहिद ने आपको दे दी हैं। आप जी वो आप इनसे शेयर कर लें, आप ग्रुप में लगा दें, ठीक है। डॉक्टर जाहिद के या मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैडम की और डॉक्टर जाहिद की ना मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं सबको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आप ये डेली कर दिया करें। और कोई बात? थैंक यू सो मच मैडम राहत, थैंक यू वेरी मच। जब तक आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग इस पे काम भी शुरू करें। आपके पास एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, बाकी जो एक सब स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट है वो मैं आपको भी दे रही हूँ, बाकी लोगों को मैं ईमेल या व्हाट्सएप करा देती हूँ। कोई और क्वेश्चन? आपका 10:30 सेशन स्टार्ट करें। 15 मिनट्स हम इनको असाइनमेंट दे दें, बीच में चाय का मैं कह देती हूँ। थैंक यू सो मच। तो जैसे कल की आपने एथिकल उस पे सुनी, तो वो देख के वो उसके दौरान जो आपके दिल में ख्यालात पैदा हुए कि ये प्रेजेंटेशन थी, इसमें ये दिखाया, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये चीज़ मुझे लगा कि शायद ये इस तरह होनी चाहिए थी, और इससे मैंने ये लर्न किया, ये चीज़ें ऐसे लिख लीजिए। और फिर मैं सोच रहा हूँ, यानी वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, कि अब मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं ये इसको ऐसे करूँगा फ्यूचर में, या ये चीज़ इस तरह करूँगा या करूँगी, तो दिस इज रिफ्लेक्शन, यानी पर्पसफुल थिंकिंग है एक, और उसको आपने राइट अप करना है। और इसका मैं एक ट्रिक भी बता दूं, आखिर में आके लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है हमने जब वो CME का 6 महीने का हमारा कोर्स था वो किया, तो बिल्कुल आखिर के वीक में बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए, वो सर पहले दिन क्या हुआ था जी, 8वें दिन क्या हुआ था, वो मैं बताएं, तो वो फिर याद नहीं रहता। तो उसका तरीका यही है कि आप उसको होने दें। कल हमें नहीं ये बताया इन्होंने, वरना तो हम कल लिख लेते। हाँ, वो उसका ये तरीका कि आप ना फिलहाल नोट्स बनाने शुरू कर दें। जी सर। जो रोज आपको बात आपको ऐसे लगे कि रिफ्लेक्शन में लिखनी है, उसको आप अपने नोट्स बना लें, और वो बाद में आपको हेल्प होगी। राना साहब की ज़ियारत हो गई जनाब, आज आपकी वीडियो अस्सलाम चल रही वालेकुम मुझे लग सर। रहा है। राना साहब वेलकम, कल हम आपको ढूंढते रह गए। चलें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। वालेकुम अब हम सर, ट्राई, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? मैं जरा आज एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं भी ये पीछे खूबसूरत सा कोई बैकग्राउंड लगाऊं, लेकिन आपको पता है कि हम को किताबों का ज्यादा शौक है, तो हमने किताबें लगा दी पीछे। वेरी नाइस सर, ये बड़ा जबरदस्त सर। आप निमरा की अक्सर वो भी शेयर करते रहते हैं, राइट अप्स भी, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने उन्हीं की बुक्स का पीछे भी लगाया हुआ है। हाँ तो आपके उसके बड़े जबरदस्त किस्म के उनके हाँ जो सेंटेंसेस होते हैं जो वाकई शेयर करने वाले होते हैं, आप शेयर करते हैं। हाँ। और जी और मैं देखें इस पे, अब आप एक और चीज मैं आप इसमें कहूँ कि मैं प्रोलिफिक रीडर, काफी पढ़ा हुआ है मैंने,
तो लेकिन अभी ये जो दो खवातीन को मैं पढ़ के ना बहुत मुतासिर हुआ, यानी जी इनका सर। स्टाइल, इनकी रिसर्च, उमैरा अहमद और निमरा, दोनों की रिसर्च इतनी, और कुरान मजीद को इन्होंने इतना माशाल्लाह समझ के और उसको अप्लाई किया है। ख़ासतौर पर मैं समझता हूँ हमारी यंग जनरेशन को ये पढ़ने की ज़रूरत है। और ये इनकी उमैरा की तो किताबों के 6 ज़ुबानों में तर्जुमे हो चुके हैं। माशाल्लाह सर। अब भी आप, यही बात है कि ना, मैं पढ़ी थी मौलाना रूमी की बायोग्राफी। Bismillahirrahmanirrahim. Should we start? Thank you very much, Professor Saira. It's always been a pleasure working with Madam, and she gives so much energy and boost to us. It's all about because of her. And she made me take this course from University of Health Sciences a couple of years ago. And now, thank you, Madam, for including me in the faculty. So now we start with the presentation. This is a long presentation. Some of the slides are for you to review later on, and we will skip through them. And some of the slides, I will just emphasize few certain points. Let's start. Now, in just a couple of sentences, what is editing? If we just in one sentence, it's carefully reviewing material before it is published. And also, it's not just critique, it's not just the critique, it's also suggesting or making changes to improve it. Now, the success of any journal depends on publications which are well written, well organized, and high quality material. And in order to produce a high quality material, we must ensure all the material in the publication is present with the highest standard and conforms to the journal's style. I think if you are able to read this. So editing mainly involves doing the menial jobs like eliminating the grammar mistakes, the punctuation marks, and ensuring your writing is precise. It reduces the awkward phrases and the language, which makes sure that the matter is consistent with the topic. Now, where it is used, medical editing, it can be used in books, articles, research articles, dissertations. And the learning objectives of today's presentation: what are the types of editing and how do they work together, these types? Yes, it's a complex process. It's not easy as it sounds. And the critical part of process is rough draft. This is the start and the final version of the article which is published. So the process involved in between, we divide into four major types, but these types overlap. We will discuss in the later slide. The first step is in the editing is the developmental or substantive content editing, and then the next one is structural editing. They both overlap at times. The third one is the copy editing, and fourth is line editing. They at times they have a gray area with them, and fifth is the mechanical editing. But these different types are mentioned in various different texts differently with different synonyms. In this, okay, in the next slide it will be clear. So the questions to ask in the editing: we have to determine who are our audience and what's the key message in that paper, and what the audience want to know, and would your audience more logically look for if the message which topic is conveying is the content conveying or logical in the same way, and what pieces of information we need to gather together, and how can the audience be led through the information clearly. The type of editing which is best for your masterpiece: there are 4 stages, as I mentioned earlier. We are going to overlap them. The
The first one to start with the structural editing, the major structure of the article. Second one is the stylistic or line editing. Third is the copy editing. Fourth is the proofreading. In different texts, it is placed differently. Sometimes they place copy editing on the first, and the line editing is part of the copy editing. We will discuss in the later slides. And yes. Yes, in a subsequent slide, I will explain in the subsequent slide. That is one slide for that thing. In various essays, they also start with the structural or substantive or copy editing and the proofreading. So I have placed these 4 slides because to get in various references, it's written differently. The different names are which are synonyms for each other. So in this, you can see they have divided into 6 main types. First is the substantive, then they say it's the developmental is the second one, then the copy editing, line editing, proofreading, and then the style editing. So this slide. So all these are the same things: developmental, substantive, or structural, conceptual editing. It's also called manuscript appraisal. It sets the foundation for a non-fictional. We are talking about a medical editing, which is non-fictional. It focuses on the content and structure, moving chapters around, adding headings, deleting different sections, modifying visual elements, and creating new content. So all these include, because we are dealing with the structure, we are modifying the structure. And it's the first step, and it looks deeply to the content. And we must have an holistic approach, considering a bigger picture, and question if contents of the paper make sense, the tone, the quality, or the fluency, and it flows well with the information. The ideas are clearly developed and are well articulated. Any major logical holes or flaws in the study. Leave notes and recommend big changes. This is important. This is the critique part, and then this is the suggestion part. You leave certain notes, you write something, and you recommend the changes to the author. And you may also delete sections or suggest adding more information. The 3 principal sections, if we, as an anatomy, we divide it. The structure is the container that holds the story, and the narratives is all of the story elements, such as character, the major scenes, and the language includes a dialogue and the physical description and the sensory information. So if you go in the detail, we are dealing with the structure, the narrative, the language. Why it's important? Because at times writers are, they are technical people, and they often struggle with keeping perspective on their own work. And they are too close to know that what does or doesn't work for another reader. Maybe I am an expert in certain field, but my reader is not that, into that particular thing. So we need to take things to a level where reader can understand. Writer unconsciously fills in the narrative gaps with their own knowledge of the book. At times, but I think maybe, I'm biased and I put my own ideas into the paper. And they can be enthralled with their subject without considering general interest. Maybe, I go into too much detail in my paper, which doesn't interest the reader. And it's all about showing the writer what works, how the things should work. And what it is and what it isn't. It denotes significant structuring or restructuring of manuscript. And what it isn't, it is not line by line correction. So in a later section, we will, see
हमारा आइडिया ये होता है कि शायद हमने अभी से उसकी ग्रामर, पंक्चुएशन और सब कुछ ठीक करना है, अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए, अभी हमने एज अ होल उसको देखा कि आइडिया क्या है आर्टिकल का, व्हाट इज द स्टडी अबाउट, व्हाट राइटर वांट्स टू प्रेजेंट एंड इज इट लॉजिकली प्रेजेंटेड, the different paragraphs, lengths of the paragraphs, the placement of the paragraphs, हम उसको देख रहे हैं, अभी हम grammar और उसकी किसी punctuation पे ऊपर नहीं आए. So it's not line by line correction. There are a few things which we need to consider. We should be open-minded when we are, reviewing it or we are editing it. Be prepared to suggest rewrites. It's not about just, saying what is wrong. We need to suggest how it can be improved. And, a bigger picture and patience, is very important. Reading all these things so many times. Your editor is reading these articles, so many articles in a week. So, at times we are not patient. There's so much detail you can later on you read this. We will focus on, right. So, when a hard copy comes, maybe, you read it in so much detail, you write the notes, you underline it, and then make up, summary and suggest to the author or authors what can be improved. So, ये हट सकता है ये picture नहीं? So, like somebody has written a paragraph. So, how we would, edit it? We need to, eliminate some repetitions or something which is not important, or we need to summarize in a better way. So it's basically the content, language and style, presentation clarity, document flow, cohesion, and consistent with the voice and tone throughout the document. Mathematically, if we divide this component, B1 assess the overall organization of the content. B2 is reorganize the material, achieve a coherent structure, and all that about. B3 recommend necessary headings and navigation aids. B4 is recommend or implement the most effective position of textual material like sidebars or pull quotes. B5 is the determine and either indicate or implement the most effective position of visual elements if there are some. Revise, cut or expand material and suggest the changes. These are different ways to, to see what is the editing cycle, the developmental or structural editing cycle. You can read it later on. And later on, last one is the communication, how to clearly and diplomatically convey to the author why you have done this, why you don't want, you want to rearrange the paragraphs, or you want some, different clarity. So you have to be very diplomatic. A communication should be in a very good, precise manner. Now, the second one is the copy editing. This is the one where we check the grammar, spelling, the usage of the precise words, the correctness, consistency. The editing, the first one focuses on the meaning of the written content, but the copy editing focuses on the technical quality, the technical aspects. These are some examples which I have put in the presentation. You can read it later on, the different examples. You can see the red ones are the ones which we cut, and the blue ones are which we have suggested. In place of can, count, we can write rely, or we can cut the whole, half of the sentence. They also go through important measures. We can say take strong measures, or we can to keep sustain the word use kar sakte hain. So this is the example of copy editing. So ये हमारे दिमाग में सबसे पहले एडिटिंग से कॉपी एडिटिंग ही आता है, which is actually the second stage. हमने पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, आइडिया, क्लैरिटी, फ्लो कोहेरेंट है या नहीं, उसके बाद नाउ वी आर चेंजिंग द ग्रामर, पंक्चुएशंस और वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं.
just like, this example, there are different spelling mistakes or nouns which are wrongly written. Why we need to, copy edit? Because it confuses the readers and annoys the readers. They also reflect poorly on the publication quality of the journal, and if everything is good or perfect, it elevates your articles. You can't just rely on spell checkers. At times British English or American English, or at times there are words, different medical terminologies which spell checks cannot determine. So it is a manual work. You need to apply your mind and read everything in attention to detail. If I say a word, it's attention to detail. So copy editing can further be divided into different types. Just in very briefly touching it. First is the stylistic editing, which is also called line editing, as we mentioned earlier. Different names हैं उसके, different तरह से आप उसको कर सकते हैं. तो line editing से शायद हम confuse हो रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है. Actually वो line पर line रीडिंग ही है और या करेक्शन ही है, लेकिन अगर आप उनको ज्यादा बेहतर तरीके से, तो हम स्टाइलिस्टिक एडिटिंग उसको कह सकते हैं. So it's the process of assessing a piece of work as a whole, consisting the clarity, the accuracy, the tone, consistency, the same things but with a different perspective. इसको end पे आ सकते हैं. So rewriting, line editing, fact checking, more straightforward type of copy editing, in which there are some universal facts and which we need to confirm and check. Or rewriting involves reconstructing a portion of all of a written piece. Or SEO copy editing, what is SEO? It is search engine optimization. Certain words and phrases which help our article to be pulled from Google or from online resources. Just like adding America Saves is a clickable and is a SEO friendly headline rather than 54 ways to save money. So you just add a name, save, and people readily get the results. Just like, shopping bank, money saving is the more, catchy phrase rather than, explaining it in different way. Then the last one is the proofreading, which can be the end part of the copy editing, which is the process of checking grammatical accuracy again, because you had suggested certain revisions, and you again need to check if the grammar is correct, the fluency is okay, correct spellings, capitals, punctuation, formatting, noun, pronoun, verb usage, sentence, all these things. Just like let's eat grandma or let us eat grandma. So it takes the meaning out of the context. So proofreading is the end, just the end one. It can be a non-technical person who is proofreading, who is just checking the grammar and the punctuation marks, the capitals. But the structure editor, it is the subject specialist who knows what is the idea behind it, who can suggest certain edits. But the proofreading is the end thing. He can also do it, yes. But so बिल्कुल ऐसे बिल्कुल. So I've added certain breakers for a dry subject, and so who can copy it, as you suggested? Due to budget constraint, at times one person is doing multiple jobs. Even technical person can do the proofreading. Otherwise, the bigger journals, they have dedicated staff, the language expert and the technical experts. Yes, there are software. Excuse me, one question, Dr. Suhail. Yes, please. Is there any software who can do this proofreading or copy editing?
Yes, ma'am. No? There are certain software which have some free versions which are which have limited use, and but you have to pay them. And there are some paid softwares which have very good results. But for a technical journal, a medical journal, it's always advisable or always better that it is done manually. It can be cross-checked through a software, but at the end of the day, responsibility lies with the person who is verifying things. So yes, it can be done through a software, but I think our institution doesn't have that facility where we have subscription of these expensive softwares. But if somebody wants, yes, it can be done. Okay. Yes. Right, right. So at times the journals which are charging us more for the articles, they have these services in the background. So these are the details you can go through afterwards. No, the checklist for the copy editing. Check the format of the headings and the paragraphs. Ensure the grammar, spellings, punctuation. Ensure the use of italics, bold, and the quotes. This is very important. At times we just skip this important aspect where the italics should be used and where the bold needs to be there or can be eliminated. And ensure the units are in SI units for that country. Like we follow the metric system, America follows imperial system. So we need to know which units our country is using. Check the figures and the tables, refer to the text. Check if the number of tables and figures are not excessive. Check the tables have clear titles and column headings. The use of abbreviations, there are certain universal abbreviations which can be allowed, but mostly if you want to use the abbreviations, you first have to describe the word in first, and then you can later on in that article use them. Ensure the drawings and photographs are clear and are good quality. They are not hazy, and after the print, at times the photograph is of not good quality. In the print, it comes really hazy and nobody can understand it. And important thing is check all the referencing in the text, and we must know which the text style our journal is following. The reference format, and mark up the text ready for the layout. Layout is a bigger, holistic approach where you see, figures, tables, and everything. The text is according to the journal information or journal guidelines. So there are certain slides I've added. So, copy editors, what, my friends think I am doing, what my mom thinks. So it's a, just a funny meme. So what we really do is, just, placing different words here and there. It's not as fun as it sounds. And, we become so obsessive compulsive at times, you can see. This is a printed book where it's written 5 and actually it's a 6. So, so it can, even, with stringent, all the guidelines, these things can happen. See this slide, OCD. So, you are even, scolding your kids, you are not using the right. So, right. So, making a flow charts vertically, horizontally, it's again, the idea is to stress the, first is the evaluation, development, structure, copy editing, and then the proofreading. So all, these slides will be in your. Yes, वो सारे interchangeable है. Mechanical is the end one. This is the, the journal. किसी भी journal का जो है guidelines के मुताबिक कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन है वो उसको फिर वो देखेगा कि वो मैकेनिकली वो हर चीज उसमें फिट इन हो रही है या नहीं हो रही. The proofreading at this stage, the work is final layout. Everything has been done. Now again we are reading it. Again we are seeing कोई clerical error भी हो सकता है. Something can be missing.
So how to be a good editor? A few years of experience, book editing experience, you know, compatible with your personality. If you are go free, laid back person, maybe, it's not a job for you. And knowledgeable about the entire publishing process. It's very important, different timelines, following them, responding to the queries, suggesting, different, write-ups. I have taken this quote from WAMI, World Association of Medical Editors. The medical editors should pursue lifelong learning and teaching. So we are, with these sessions, we are learning, also teaching. So, and recognize the need to remedy knowledge deficit in themselves and their co-editors. So it's a dynamic process. It's not a one way. So every day we learn something new. With every session we learn something new. Some of the slides I have borrowed from the last participants who made different slides. Some of them I borrowed from even them. So thank you very much. So any questions about? I hope the content is clear. So basically developmental, structural, the manuscript, appraisal, all these terms can be used interchangeably. And आप उसको mathematically divide करते भी जाएंगे तो वो कोई आप 6 में divide कर लें, उसको 3 में कर लें, तो there is a gray area, this overlap different sections. वो राइट वो हमारे अलग से हमारे लेक्चर्स हैं जिसमें प्लेजरिज्म को हम टच करेंगे, डिफरेंट चीजों को करेंगे. ये हमने ओवरऑल नेक्स्ट 12 यस उसके अंदर सबसे पहले हम ये सारा कुछ फैक्ट चेकिंग उसके अंदर करेंगे. हम उसके अंदर कंफर्म करेंगे कि जितने भी हमने पहले बताया कि यूनिट्स भी हम इवन कंफर्म कर रहे हैं, हम फैक्ट्स को कंफर्म कर रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज जो दिया गया है वो सही है या नहीं, वो सारा कुछ पहले डेवलपमेंटल के अंदर है. उसमें 14 स्टेजेस हैं B1 से B14 तक. यू विल गो थ्रू, आपको उसमें पता चल जाएगा किस स्टेज पे हमने उसको क्या करना है. यस सो इसलिए हमने पहले यही कहा कि हम डेवलपमेंटल जो है वो एक टेक्निकल पर्सन ही करेगा जिसको बैकग्राउंड नॉलेज उस चीज का है. इट्स नॉट अबाउट फॉर नॉट अ जॉब फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन. कॉपी एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग वो एंड में नॉन टेक्निकल भी कर सकते हैं इसको ना. सर वी वेलकम प्रोफेसर जाहिद कमाल साहब. सर मैडम दूसरी प्रेजेंटेशन भी अभी है, ये भी है. ये one question, excuse me. जी. रिव्यूअर और एडिटर में क्या डिफरेंस है? जो रिव्यूअर भी तो करते हैं ना यही सब कुछ. The guiding principles are the same, yes. लेकिन उसके अंदर जो है वो आपने जर्नल के ने सब कुछ ये सारा कर लिया, उसके बाद रिव्यूअर भी उसको सेम चीजें वो देखेगा. उसमें कोई वो सजेस्ट करता है, कोई एडिट सजेस्ट करता है, he can also do it. At times things are skipped in the first stage. तो रिव्यूअर्स का मकसद ही यही है कि वो जितना ज्यादा आप उसको फिल्टर करते जाएंगे वो और ज्यादा पॉलिश होती जाएगी चीज. Yes, editors. Yes. Right. 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 So मैडम की बात को समराइज करूं तो वो एक डेवलपमेंटल स्टेज है. फर्स्ट स्टेज में आप रिव्यूअर हैं तो यू कैन बी एन एडिटर, सो इट्स नॉट द अदर वे अराउंड. एंड थोड़ा लिमिटेड रोल है रिव्यूअर का, और जो एडिटर है उसका जरा ज्यादा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में वो चीजें देख रहा है. तो जी सर मेरी क्वेरी है रियल लाइफ सिनेरियो. आपने कॉपी एडिटिंग की एक स्लाइड दिखाई थी, दैट वाज वेरी ऑसम, जिसमें आपने रेड कलर और ग्रीन कलर में मतलब वो एडिटिंग की, कॉपी एडिटिंग. तो जब मैं किसी मेडिकल जर्नल में किसी रिसर्च आर्टिकल की एडिटिंग कर रहा
टेम्पलेट में वर्ड फॉर्मेट में भेजा है तो इट्स वेरी इजी। लेकिन अगर मैं इसे अदर की काउंट करूँ कि अगर मैं सुपरवाइजर हूँ और मुझे मेरा रेजिडेंट जो है वो रिसर्च आर्टिकल थीसिस सिनॉप्सिस दे रहा है, ठीक है, उसके अंदर सर कॉपी एडिटिंग भी करते हैं सुपरवाइजर्स और स्ट्रक्चरल एडिटिंग भी करते हैं। Right. तो जब सर कॉपी एडिटिंग करते हैं तो आपने पंक्चुएशन और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आपके पास ये वर्डिंग नहीं है कि वो आपको सॉफ्ट कॉपी दे रहा है जिसके अंदर वो रेड कलर और ग्रीन कलर वाला आता है, आप उस पे कटिंग करते हैं। Right. और जब आपने स्ट्रक्चरल एडिटिंग भी करनी है जिसमें आपने पूरे पैराग्राफ को रीड करना है या नए पैराग्राफ डालना है तो उसमें भी ना सुपरवाइजर साथ लिख देते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस है जो बेसिकली रेजिडेंट के फायदे के लिए है, लेकिन उसको रेजिडेंट्स जो है वो अच्छी नजर से नहीं देखते, वो कहते हैं इन्होंने तो बातें मानी। Excuse me, we can't hear her. Right. So the question is कि तो सर इसका इसका बेस्ट एथिकल वे क्या है कि हम एक रिसर्च आर्टिकल थीसिस या सिनॉप्सिस की कॉपी एडिटिंग भी कर लें एज सुपरवाइजर और स्ट्रक्चरल एडिटिंग भी कर लें और वो अच्छे तरीके से। yes, at the end of the day, you have to follow the guidelines and the rules. हमने फर्स्ट बात ये सबसे पहले जो हमने दिन में बात की थी दैट इज अबाउट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द पॉलिसीज एंड वंस द पॉलिसी हैज बीन मेड देन यू हैव टू स्टैंड बाय इट। अब मसला क्या आ रहा है वी नो, जैसे आपने कहा कि रियल टाइम सिनेरियो क्या है, प्रेशर्स आ रहे हैं, अगर आपके सीनियर के नहीं है जूनियर्स के भी हैं, इवन आपके कोलीग्स के भी हैं, यू वांट टू हैव अ गुड टर्म्स विद देम। अब डॉक्टर जाहिद इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हालांकि इनका आज सेशन नहीं है एंड ही इज सो काइंड, वो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ही इज डूइंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट, राइट। लेकिन मुझे ये पता है कि डॉक्टर जाहिद के पास अगर कोई पॉलिसी है और मैं इनसे मैं क्या कोई भी आप से कोई रिक्वेस्ट करेगा, ही वुड नॉट मेक एनी फ्लेक्सिबल डिसीजन। So we should be very clear with the policies and rules. Thank you very much, Dr. न्यासी। जो rules है और हमारी policies और regulations है ना, हमने कल वो पूरा सेशन उस पर किया है। अगर आप इस पे फर्दर हम बात करना चाहते हैं तो you are with us for the rest of the days, हम इस पर दोबारा भी बात कर लेंगे। Thank you so much and it is wonderful presentation. कम से कम मैंने खुद बहुत सीखा है डॉक्टर न्याजी से। So this is not about age. This is not about where a person is working, emergency department में काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एक फ्लो है नॉलेज का, that is excellent। आपको 1000 चीजें आ रही हैं और आप 2 चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं, और एक शख्स आप उसको 100 चीजें आ रही हैं और 100 चीजें ही ट्रांसफर कर रहा है। तो that is the art। और ये डॉक्टर न्याजी, आई एम सो ग्लैड कि आपने जो कुछ हमें ट्रांसफर किया है हमारे अगले 4-5 दिन के लिए, वो बहुत है कि हम उसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस को अलाइन कर ले। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर न्याजी। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर साया तारिक, शी इज विद अस एंड अगेन अ वेरी गुड फैसिलिटेटर एंड अ वंडरफुल टीचर एंड यू विल हैव मेनी न्यू थिंग्स अबाउट मेडिकल एडिटिंग टुडे। आज जरा बम्बार्डमेंट ज्यादा है, कल ओवरव्यू था, आज जरा आपको डेप्थ में हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह। Thank you very much, Dr. Saira, for being ever so kind. Madam बहुत ज़्यादा तारीफ कर देती हैं, इतना कुछ है नहीं। और let me tell you from the outset that frankly कोई इसमें इतनी bombardment नहीं, it's a very relatively very simple concept, और Dr. Niazi has really made my life easy for me because उन्होंने बहुत depth में सारा editing का process बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। We take it from there कि जब इतनी माशाल्लाह इतनी extensive editing हो जाए तो we talk about editor-author relationship. That we initially we talk about relationships. Agli slide kar dein please. We talk about relationships actually. Acha sorry ठीक। So we're running behind time also, so I would kind of expedite that what exactly are relationships, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मैडम ने क्वेश्चन किए, मैडम अनीला ने, वो भी बहुत अच्छे तरीके से फ्रैंकली आंसर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ अस सिटिंग हियर आर आइदर वर्किंग एज एडिटर्स इन सम कैपेसिटी, और ऑथर्स तो ऑफ कोर्स सब हैं ही हैं, बिकॉज ऑथर्स होंगे तो कल को आप फिर एडिटर के लेवल पर पहुंचेंगे। सो बेसिकली एज अ बैकग्राउंड, आप
relationships क्या होती हैं? Relationships जो हैं, it could be our associations or our sort of connections, और या हमारी जो होती हैं dealings जो होती हैं with other parties are actually relationships, be it on a personal level or on a professional level. Our topic of interest today here is, of course, our professional relationships, where we're working as editors and authors, because all of us are working on day-to-day working of a journal. Now, जहाँ पर इतना ज्यादा काम हो रहा है editing का, your relationship could either be very positive or very good with your the editorial office, or unfortunately some people take it adversely also, and your relationship could go sour at some point. ठीक है? So basically हम इन चीजों को यहाँ पर touch करेंगे. So we talk about the editor-author relationship. As I was trying to sort of put together this presentation, I thought what all should be there, and so I thought कि basically आपको just take you through that exactly who is an editor and what all is desired for an editor to be sort of performing. Who is an author? Of course, you all know, but then from a technical point of view, what all should an author be doing, and how an editor should be there to facilitate the author. Okay? And then sort of characteristics of a good editor, characteristics and qualities of a good author. So this is how I plan to take you through this presentation. Now, I'm sure all of you know कि जो editor होता है, he's actually the steward or the chief executive officer of the journal. आपको पता है आजकल का buzzword हर चीज का CEO is like the biggest authority. ठीक है? So your editor is frankly the CEO of your journal. He or she is the pivot or the linchpin. Pivot जिसके ऊपर आपका सारा journal जो है वो rest करता है. So it's a huge responsibility. Jitna bhi keh dein utna hi kam hai, frankly, sir, madam, of course, no, because they wear that crown, or wo kehte hain uneasy lies the head that wears the crown, because it comes with a lot of responsibility. Editor hota kaun hai? Editor wo ho sakta hai somebody who's very well qualified as a scientist, somebody who's very well respected in his or her field, somebody who's a very competent researcher also, because here we're talking about scientific research journals, somebody jiski bahut zyada expertise or knowledge ho in reviewing, editorial duties उन्होंने perform की हो over the years, जिस तरह अभी हम reviewer की बात कर रहे थे. So it's like working your way up the ladder. ठीक है? So somebody who has this very rich experience of all this. और फिर उनको journals को जो day-to-day proceedings हैं, उनकी बहुत अच्छी knowledge और experience हो कि किस तरह journal ने काम करना है, और also as an author बहुत उनका rich experience हो as an author. And of course यहाँ पर because हम एक scientific health sciences journal की बात कर रहे हैं, वो हमारा focus है, तो आपको पता है कि health sciences journals जो हैं वो आजकल एक बहुत, of course it's always been a very critical element of our health system. और बेसिक क्या है कि ये it provides a forum जहाँ पर आप disseminate करते हैं current up to date research findings और इस किस्म का evidence जो कि आपका health system की performance को improve करे. So an editor in this regard should be somebody who has a very sound knowledge of scientific methodology and of course critical appraisal, critical analysis skills जो हैं उनके वो बहुत strong होने चाहिए. So somebody who's like high up there, not working at a sort of lower rung. So an editor provides direction to the overall direction to the journal. He or she is mandated to build a strong management team. Management team editor के साथ कौन होते हैं? They could be like 8-10 लोग who are
who have the trust of the editor. They could be associate editors, they could be assistant editors, or जिस तरह सारा डॉक्टर साहब ने अभी बताया, they could be like different आगे technicalities होती हैं. Technical editor हो सकता है, copyright editor हो सकता है, proof reading के लिए अलग काम हो सकते हैं. लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर ही होता है, अक्सर औकात ये भी होता है कि because we're a medical university, इस किस्म के लोग नहीं available होते, so बहुत सारे जो आपस के आपके colleagues हैं वो यही सारी activities जो है वो perform कर रहे होते हैं. लेकिन बहरहाल it is up to the editor कि he or she needs to build a strong management team और फिर effective interactions रखें उन team की editorial team की with authors and with reviewers and आपस में, ठीक है, they have to be extensive communication between them. Ultimate responsibility for what is published in the journal always lies with the editor. I pity our chief editor because होता क्या है कि बहुत किस्म के reviewers होते हैं और अक्सर औकात क्या होता है कि वो ऐसी चीजों को obviously accept कर लेते हैं जिनके अंदर कोई लकूने होते हैं, तो eventually the entire responsibility rests with Dr. Saira और वो end में मुझे पता है फिर उनकी कितनी ज्यादा extensive एक और responsibility होती है कि हर चीज को उस एक बहुत बारीक बीनी से दोबारा से सबको देखा जाए. An editor is expected to review policies related to authorship, peer review, quality control, ethical issues. So everything sort of, comes from top bottom. Okay? The editor also ensures that the journal's processes are transparent. There is no hanky-panky going on anywhere because itne sare, rungs of the ladder, anything can happen. For example, if I'm an assistant editor and some of my colleague or friend किसी ने submit किया है article and I want to sort of, expedite या उसको favor करना चाहूँ, तो obviously it's up to the editor के कल को he or she has to see के हर चीज जो है within the domain और उनकी organization के that is going on transparently. Editor is again responsible for the editorial content of the journal, what makes it till publication. Make final decisions on manuscripts. हो सकता है हमें निचले level पे कोई चीज बहुत proper और बहुत इस तरह की लग रही है कि that is very important and it would really sort of add to the body of knowledge that is already there, but it is up to the editor-in-chief to make the decision that what goes where and how important it is. Manage and organize the editorial office and ensure good working practices. ठीक है, because ये जो जितने tiers पे लोग काम कर रहे हैं वो भी बहुत critical हैं, उनकी working भी आपकी journal की quality को improve करने के लिए. तो it is up to the editor to organize the office and ensure that there are good working practices taking place. Then it is up to the editor again to attract authors to submit quality manuscripts to the journal. ठीक है, ये भी एक बहुत tedious task होता है. Again, जिस तरह मैंने बताया कि इतनी ज़्यादा responsibilities हैं editor की, so this is again one of them. Represent the journal in national and international fora. And of course, madam, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो हैं वो involved हैं. And plan for the future of the journal. Where do you want to take this journal 5 years from now, 10 years from now, at what level? So these are some of the responsibilities of an editor. So I remember I have copied this slide from one of my colleagues from last time, and I think this was a very beautiful slide because, there are too many balls in the air. ठीक है, the editor is there to juggle कि हर चीज को मैंने साथ लेके चलना है. So feedback from various. अच्छा जी, अच्छा. Exactly. Exactly. हाँ. जी. Exactly.
So I think I mean जैसे वो है आप देख रहे हैं कि too many balls in the air, you know कहाँ पे किस चीज के ऊपर जो है वो you know किसको थोड़ा सा आप नीचे कर ले और किसको ऊपर, everything is like extremely important. So अच्छा अच्छा हाँ हाँ okay. Excuse me, I can't hear. जी सॉरी, ये जी डॉक्टर साहब ने पूछा है कि ये जो एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिप्रेजेंट योर जर्नल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरा, तो इसका क्या तरीका कार होता है डॉक्टर साहब? अगेन बिकॉज यू नो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द एनल्स ऑफ केईएमयू फॉर द लास्ट 5-6 years. जब डॉक्टर सायरा को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई तो आई हैव सीन हर कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एफर्ट है, और इन्होंने मैडम ने कोई कॉन्फ्रेंस, कोई आई मीन जहां लिटरली हमारी कहीं भी कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही है, बी इट इन द सिटी, आउट ऑफ सिटी, पेशावर, खैबर यूनिवर्सिटी, कराची, शी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि कोई ना कोई हमारा एनल्स का जो मेंबर है वो वहां जाए विद एनल्स की कॉपीज, यू नो सॉर्ट ऑफ जस्ट आपका जो है एक ओवरऑल प्रोग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है कि विजिबिलिटी हो आपके जर्नल की. एंड शी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि वहाँ ऑर्गेनाइजर्स से थोड़ा सा टाइम लेकर उनको थोड़ा सा बताना कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, इट हैज सच अ बिग नेम in the entire subcontinent. तो हमारा ये एक you know landmark journal है. So obviously you know when people get to know तो थोड़ा थोड़ा, and we have seen this happening over the years. जैसे आपको कल फरहान साहब बताएंगे कि शुरू में हमारी क्या you know standing थी, and then over the years इतनी intensive इनकी you know मेहनत के बाद really it has come a long way. So all this really helps. शुरू में मुझे भी frankly वो बड़ा लगता था कि हम literally अपना वो किताब ले लेके हर जगह, but let me tell you, I think it was an invaluable effort. बहुत अच्छी थी. So ये इतनी tedious जो है ये बेचारे editor की जो है responsibilities के अंदर ये सब कुछ आता है. Okay जी, अब just to sort of, because it's you know not a very tangible sort of concept. If you're a good editor, your relationship with every writer is different. And basically, there's no rocket science to it. As they say, most good relationships are built on mutual trust and respect. और ये जैसे अगर आप लोग, जैसे आप तो ऑलरेडी किसी जर्नल के साथ affiliated हैं, या आपको you know जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि basically it all trickles down to respect and mutual trust. ठीक है, between, because we're talking about editors and authors. ठीक है, जहां पर egos आ जाएं वहां पर फिर थोड़े से मसाइल शुरू हो जाते हैं. ठीक है, okay जी, a great relationship is about two things. First, appreciating the similarities, and second, respecting the differences. ठीक है, you always have to put yourself in the other person's shoes, and then you know you can actually see के उसका point of view क्या है. ठीक है, so basically क्या है कि you have to be accommodating and you know you trusting and respecting. अब coming down to authors. Author कौन है? Somebody जो अपनी creativity के through कोई एक नई चीज जो है उसको मारज़े वजूद में ला रहा है. ठीक है, a person who writes a novel, a poem, an essay or a research article in our case. ठीक है, कोई भी writer. अब author का frankly क्या purpose होता है कि you know he finds something interesting. जैसे आप लोगों के आज कितने vibrant research ideas हैं. ठीक है, ये तो obviously अभी half baked है. आप जितना ज्यादा इनके ऊपर सोचेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि how to bring them to fruition. But जैसे purpose author का क्या होता है कि आप कोई भी information जो है उसको you know अच्छे तरीके से लिखें, लोगों को inform करें, कुछ थोड़ा सा ऐसी चीज हो कि एक novel idea हो, entertainment का उसके अंदर कुछ persuasive skills आपके इस तरीके से आप persuade कर सकें, describe कर सकें. और ऑथर का क्या है, एक बडिंग ऑथर जो है he or she is familiar with writing, but an editor is a professional at writing. ठीक है, so this is the difference actually, because again जिस तरह हमने पहले बात की कि आप बहुत सारे लैडर के रंग्स जो है ना ऊपर चढ़ चढ़ के तो उस लेवल तक पहुंचते हैं, तो वो you know experience is invaluable. What do writers and editors do? राइटर जो है वो किसी भी
अच्छे टॉपिक, जैसे अब आपने बहुत अच्छा ये इस वक्त एक बताया कि जी ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस क्लासरूम लर्निंग, इट्स अ वेरी गुड, आई थिंक इट्स अ वेरी नॉवल आइडिया ऑल्सो, और स्पेशली आजकल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर. सो यू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक एंड देन you use your words to express original ideas. Okay? This is what usually authors do. On the other hand, editors review and sort of rewrite and edit your work. They decide what will appeal to readers, because ये हमेशा editor, वो कहते हैं जैसे एक vantage point पे है, एक ऊपर बैठ के एट अ मैक्रो लेवल देख रहा है कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि हमारी व्यूअरशिप को बढ़ाएगी और हमारी इससे जो है ना रीडरशिप बढ़ेगी. So what is which is in line, keeping in line with the scope of your journal. ठीक है? So and then editors offer ways to improve the work. ठीक है? ये बेसिक उनका जो प्रेमिस है काम का वो यही है कि आप जब किसी ऑथर ने कुछ सबमिट कराया, उसकी एक फाइनल कॉपी एडिटर की तरफ से आती है. दे टेक, जिस तरह आपने अभी सारा बहुत एट लेंथ अपना जो है एडिटिंग का प्रोसेस डॉक्टर सोहेल न्याजी ने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस तरह एक्स्ट्रा रिडंडेंट वर्ड्स बीच में से काटे जा सकते हैं. ऑल दिस कम्स विद ग्रेट प्रैक्टिस, यू नो. एंड देन फिक्सिंग एरर्स, जो कि प्रिज्यूमेबली जो एक फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम राइटर है उसको नहीं इन चीजों का पता. एंड देन फिक्सिंग एरर्स. अ पर्सन हु एडिट्स written material for publication. ठीक है? So यहाँ तक तो था एडिटर एंड ऑथर का यू नो एक अपना अपना साइलोज के अंदर जिस तरह वो काम कर रहे हैं. थोड़ा सा जब यू नो काम इकट्ठे आप कर रहे हो, थोड़ी सी अगर गॉड फॉरबिड फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकती है. और वो कब होती है? जब आपकी ईगोज जो हैं दे टेक चार्ज, व्हेन द editor is the final authority, by the way, but exactly, exactly, author says I am the final authority, while the editor of course is actually the final authority. Exactly, exactly, absolutely. Exactly. And it is so important, it's such a delicate line that you have to follow कि एक दो इस किस्म के जो आर्टिकल्स हैं वो आपके पूरी जर्नल का जो you know sort of आपकी एक स्टेटस, एक क्रेडिबिलिटी को नीचे खींच लाते हैं. ठीक है? So it is up to the editor then, जिसको ज्यादा पता है, obviously sitting at a vantage position, कि कौन सी चीज को मैं Absolutely. जी जी.
जैसे आजकल भी just to digress a bit कि आजकल भी हमारा एक debate चल रहा है between narrative reviews and systematic reviews, because systematic reviews जो आपका evidence की hierarchy है उसमें बहुत ऊपर आते हैं, और हमारे लोगों ने थोड़ा सी अभी half baked knowledge है, बहुत ज़्यादा लोग आजकल चाह रहे हैं कि हम systematic reviews publish करें, तो वो ऊपर लिख देते हैं title में फलाना फलाना whatever systematic review, और जब eventually हम उसको जब देखते हैं तो वो एक narrative review होता है. So there's a lot of difference between. जी जी जी, absolutely, बिल्कुल, absolutely. Bilkul. So you have, as editors, you have to be very careful about these points. And believe me, I also learned all this. इतना, हालांकि मैं 4-5 साल से काम कर रही हूँ इस चीज के अंदर, लेकिन बहरहाल ये लास्ट जो हमारी ट्रेनिंग आपसे पहले हमारा बैच था, and honestly I learned so much because Prisma guidelines को जब आपको hands on exercise मिलेगी तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा बारीकी के अंदर you are supposed to actually edit it. Okay, so it's a wonderful learning experience for yourself also. So this is where egos start coming in, and negativity sort of can start. Now look at these concentric circles that again the same point, that what the author wants to say, there's a huge area actually जो author समझ रहा है कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Ab, it is up to the editor because he or she knows ke what the audience wants to hear. Lekin obviously wo sab bhi hum ek scientific journal ke, so there's a very thin line between between the two sort of bodies. Okay? So you have to keep that in view. So in short, what are the characteristics of a good editor? जिस तरह डॉक्टर न्याजी ने हमें भी पिछली दफा ये कहा, और मैं खुद ये आफ्टर द इंटायर सर्टिफिकेशन आपको वाकई ये यकीन हो जाएगा कि आपको थोड़ा बहुत OCD होना बहुत जरूरी है, otherwise you can't be a good editor. You have to have a very great attention to detail. ठीक है, बहुत बारीकी में आपने चीजों को देखना है. Good knowledge of grammar बहुत जरूरी है, नॉलेज ऑफ स्टाइल, बिकॉज हमारे यहाँ हमने इंग्लिश लिटरेचर एक्सपर्ट्स नहीं हायर किए हुए जी. सो व्हाटएवर हैज टू बी डन बाय अस. टाइमलीनेस का आपने बहुत ख्याल रखना है. राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए. एडिटर बनता ही वो है जिसके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हों. अगर रिलेटेड डिग्री हो तो वो तो ऑफ कोर्स इट्स द आइसिंग ऑन द केक. And editing experience, of course. Nobody makes it, to be an editor who doesn't have editing experience. आगे नहीं हो रहा? Next slide. अच्छा. Editor-author relationship के अंदर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि it has to be based on trust. Mutual respect is mandatory. Okay? You have to completely, if you're an author and you're submitting an article to a journal, you have to completely trust the the organization के इसके अंदर कोई वैसे हेरा. वैसे ये है कि डॉक्टर सारा on a lighter note, बहुत इस तरह के इंसिडेंट्स मिलते हैं कि आप इस किस्म के जर्नल्स को कभी जो खैर पता ही होता है कि प्रेडेटरी जर्नल्स कौन से, अगर if you submit by mistake या कुछ और आपका एजेंडा हो तो anything can happen. But a good reputable journal जिसको अगर आप submit करें तो mutual respect and trust is mandatory. Works best if both are working on the same wavelength. Okay? Editors, you have to sort of keep this in mind that they're very responsible people. ऐसे नहीं है कि आपका कुछ वहाँ पर आगे पीछे research हो जाएगी. But then there are incidents के जहाँ मैडम ने हमें पिछली दफा बताया कि जब किसी ने किसी जर्नल में सबमिट किया और वो before publication editorial team में से किसी ने उस तरह उसका excerpts लेके, तो basic idea cheat करने वाली बात होती है, तो वो उन्होंने उठा के कहीं और पहले से कोशिश करके पब्लिश करा लिया. No place for egos and personal attachments. For a good, smooth editor-author relationship, you should have to put your ego to a side. The only focus is the work itself. Okay? Whatever you have written, that should be the only focus. Professional boundaries need to be maintained by both sides. ठीक है, ना कि
एडिटर को ब्रीच करनी चाहिए और ऑथर्स को बिल्कुल ब्रीच नहीं करनी चाहिए। और हम बाद में हम थोड़ा सा 5 मिनट्स अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखते हैं। जैसे 5-6 सालों में 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पर ऑथर्स ने बहुत सीरियस ब्रीच जो है अपना प्रोफेशनल बाउंड्रीज का, जो कि अगेन या आप लोगों को प्रैक्टिस से पता चलेगा। अब ऑथर्स जो हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और एडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो ऑथर्स को किस तरीके से सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेट और सपोर्ट करें। The editor should prepare and publish clear instructions for authors and establish effective mechanisms for communication and interaction. अब किसी भी अच्छे जर्नल को आप अगर उसके ऊपर लॉग ऑन करें, सबसे पहले आपको अपना सबमिशन से पहले इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स देखनी है, क्योंकि बहुत क्लियर कट हर चीज जो है वहां पर स्पेल्ट आउट है। हमारे यहाँ भी अक्सर ऐसे होता है कि आर्टिकल पहली दूसरी जो हमारे सॉर्ट ऑफ साइफन्स उनको क्रॉस करके वहां तक आ जाता है, जहां पर उन्होंने बेसिक जो हमारा जो जर्नल का आउटलाइन जो आपके प्री रेक्विजिट्स हैं उनको नहीं फॉलो किया होता। एब्स्ट्रैक्ट अनस्ट्रक्चर्ड होगा, कुछ ना कुछ इस तरीके का कुछ होगा। तो बहरहाल there are very clear cut instructions, जहां पर of course अभाम होगा वहां पे मसाइल भी हो सकते हैं। और फिर कम्युनिकेशन के, जिस तरह मैडम ने आपको शायद अब बताएंगी अभी अगले कुछ दिनों में, कि जैसे जो ही आप सबमिट कराते हैं तो एकदम से एक जो है ईमेल जो है वो उनको वापस मिल जाती है कि योर आर्टिकल हैज बीन सबमिटेड एंड यू नो इट्स गोना टेक दिस एंड दिस टाइम। सो कम्युनिकेशन हैज टू बी देयर, इंटरेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे भी होता है, हमने भी ऐसे जर्नल्स में कराया कि जहाँ पता ही नहीं था कि पता नहीं आर्टिकल हमारा मिल भी गया है कि नहीं, एंड देन वी वर ट्राइंग टू कॉल, ऑल्दो हत्तल वसा कोशिश यही होती है कि कॉल ना करें, अगलों को तंग नहीं करना मकसद। लेकिन बहरहाल जब बिल्कुल एक टोटल ब्लैंक होगा अगली साइड से, तो फिर यू हैव टू whatever the आपस का जो आपका जो है relationship, it has to be very fair, you have to be very courteous to each other and honesty के ऊपर जो है ये मबनी होना चाहिए। prompt communication होना चाहिए editorial team की तरफ से for the authors and ensure that they maintain high ethical standards from both ends। ठीक है, ऑथर्स के ये भी नहीं होना चाहिए कि आपका 90% प्लेजराइज्ड आर्टिकल आ गया और फिर आपने इंसिस्ट किया कि नहीं, क्योंकि ये बहुत होता है डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर, एंड देन यू नो दे मेंटेन दैट नो दिस इज आवर ओरिजिनल वर्क। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑन बोथ एंड्स, ठीक है, एडिटर के एंड के ऊपर भी और जो है ऑथर के एंड के ऊपर भी इसको आपको जहन नशीन करना है। Authors are expected to be prompt and polite in their communications and to ensure that they adhere to the ethical standards of the journal। ठीक है, अक्सर औकात हमने ये देखा है कि अगर रिव्यूअर्स बहुत promptly ऑथर्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ऑथर्स एक महीना 1.5 महीना वो वापस रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे अपना करेक्शंस को। ये बहुत कॉमन जो है एक अकरेंस है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है ये दिस इज एन आर्ट एंड अ स्किल जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें सिखाई तो नहीं जाती, लेकिन यू लर्न इट द हार्ड वे व्हाइल ऑन जॉब। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इफेक्टिव मैकेनिज्म हो। यू हैव टू इंश्योर एविडेंस फॉर डिसीजंस। जो भी आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग एनी मैन्यूस्क्रिप्ट, यू हैव टू हैव एविडेंस फॉर दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिटर्स। ठीक है, आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए, जो कि अब हमारा तो ओपन जर्नल सिस्टम है, उसके ऊपर हर चीज जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। सो आपका जितना जो है एडिटोरियल वर्क फ्लो, रिव्यूअर्स रिपोर्ट्स, दे आर ऑल अपलोडेड ऑन टू द ओपन जर्नल सिस्टम। सो उसमें पता है कि अगर ये रिव्यूअर ने ये कमेंट्स दिए, इनकॉर्पोरेट किए ऑथर ने, और अगर उसने रिजेक्शन है तो बड़ा क्लियर कट लिखा होता है, और आइडियली होना भी ऐसे ही चाहिए कि क्यों, व्हाट वाज द बेसिस फॉर रिजेक्शन और सबमिशन एल्सवेयर और रीसबमिशन और व्हाटएवर। पंक्चुअलिटी, आइडियली पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, बट जैसे कि आपको खुद भी पता है कि हर बंदा जो है यहाँ पर प्रो बोनो काम कर रहा है। इट्स नॉट दैट आपकी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिव्यूअर्स की, एडिटर्स की बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट हतल वसा कोशिश होनी चाहिए कि पंक्चुअलिटी at both ends, frankly. Professionalism, of course, has to be exhibited, honesty in your communication, politeness, concentration on detail and clarity.
कुछ जो हैं जर्नल्स, बल्कि काफ़ी जो अच्छे वेल क्वालिटी जर्नल्स हैं वो क्या हैं कि सबमिशन सपोर्ट जो है ऑथर्स को प्रोवाइड करते हैं. There must be up-to-date information for authors on how to submit their manuscripts and also provide them with appropriate forms such as declaration of authorship, copyright form, ethical clearances वगैरह की ये सब जैसे अगर आप annals का देखना चाहें तो हर चीज़ बहुत explicitly आपको हमारी website के ऊपर available है. Good service to authors, again उसके अंदर क्या आता है, अगर आप fast and efficient manuscript processing करें, हर बंदे का अपना एक pre-assigned role है और उसको वो जितना efficiently जो है manage करे, तो obviously it lends to, you know, more higher credibility of the journal. Minimize processing and publication lags. जितना हो सके कोशिश इसको जो है आपको facilitate करना है authors को. So कुछ key points के आपकी processing जो है वो बहुत efficient होनी चाहिए. Communication दोनों जो फरीक हैं इनके अंदर बहुत regular, efficient, clear communication होना चाहिए. Fast time from submission to decision and then fast time from acceptance to publication. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर editors जो हैं वो facilitate कर सकते हैं अपने authors को. और थोड़ा सा ये बहुत interesting है कि कई journals जो हैं वो they try कि authors को इस किस्म की support दी जाए कि how to write well. For example, you know, workshops conduct की जाएं, personal assistance या advice भी दी जा सकती है, feedback on submitted papers जो है in person भी दिया जा सकता है, और having a transparent policy for dealing with problems. Basically, the editorial board is not should not overreact to problems and conflicts need to be resolved amicably. बहुत सारे अब जो हैं organizations के अंदर उन्होंने ये conflict resolution के लिए या जहाँ पर कोई इस किस्म के you know dissension आ जाए उनके लिए उन्होंने एक ombudsperson का you know office रखा हुआ है, somebody जो who mediates between the two parties. ठीक है, so that could be it. BMJs जैसे जो journals हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह की support provide करते हैं कि आपके article को you know how to improve your writing और इस तरीके के. So towards the end, good relationship के लिए editing should be a collaborative process based on mutual respect. The editor should respect the author's expertise and passion. Authors are usually very passionate about you know what they're writing. And the author should respect the editor's expertise and passion. Okay? So it goes vice versa. 10 steps to becoming a better writer, or वो क्या है? Write even more than that, because there is no substitute for hard work. And let me tell you, हम सब ने ये बिल्कुल hands on ये सीखा है कि the more you keep writing, और खुद बखुद आप over a period of time appreciate करेंगे कि किस तरह आपकी जो output है वो किस तरह improve की है. You have to be intentional with communication. बेवजह आकर जो है अगलों को बग करना, या अक्सर हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं बेचारे वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि रात को मुझे 11 बजे फोन कॉल्स, फिर किसी प्रोफेसर से फोन कॉल, you know, things that you can't sort of avert, but ऐसा होना नहीं चाहिए. Don't fight about revisions. अगर उन्होंने आपको suggest किया है कि revisions required हैं तो revisions required हैं. Don't fight over petty, you know, they're out there to help you. Be your own fact checker and proofreader. और again, ये सब कुछ तब होता है when you're honest with yourself. Be a quality writer, be open to feedback. और editor के certain rules क्या हैं? You have to care for time. अगले को one should be reasonable कि अगले ने अगर आपके पास submit किया है तो you can't take like, there are journals जिनका पहले दिन लिखा होता है कि you should expect 6 to 8 months before a publication. यहाँ तो आप बिल्कुल उस तरह लिखते हैं, but otherwise आपको थोड़ा सा you have to be reasonable and care for time. Answer questions and follow-ups promptly. Don't expect to get out of revisions. Do not consider yourself as final authority. Be kind to each other. Okay, basically, you know, at the end of the day, it's, you know, being kind to one another. And at the very end,
I felt that editors and authors have a symbiotic relationship with each other. Without the other, you cannot be there. Authors cannot publish if editors do not edit. Similarly, editors cannot polish if authors do not write. Okay? So we have to, be cognizant of all these facts in order to improve. Thank you very much. I think that's all. Agar if there are any questions, I'll be happy to answer. Ji. थैंक यू वेरी मच, आपने हाईलाइट किया. हम इस पे मजीद बात करेंगे अपने कमिंग सेशंस में कि हाउ टू राइट टू द ऑथर्स. अगेन व्हेनेवर, पहले हम क्या हैं, वी आर ह्यूमंस. और सबसे पहले जो रिलेशनशिप है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट हम कोलीग्स हैं, हम दोनों एक डिपार्टमेंट में हैं, हम फॉर एग्जांपल मैं एडिटर हूँ, डॉक्टर सारा एडिटर हैं, और में से कोई ऑथर आता है, इस सारे रिलेशनशिप से पहले वी हैव ह्यूमन फीलिंग्स. सबसे पहले हम ने जो हमारी बेसिक एथिक्स या बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए ह्यूमन टू अदर ह्यूमन इज टू बी काइंड, टू बी काइंड. अगर आप एक शख्स ने दिन रात मेहनत की है और उसके बाद उसने अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट किया है, इट इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग समथिंग, अ मास्टरपीस. दूसरा शख्स उसको इम्प्रूवमेंट के लिए या स्टैंडर्ड के लिए या अपने उसकी जो गोल सेटिंग है या पॉलिसी ना उसके मुताबिक उसको रिजेक्ट कर रहा है. जस्ट बी एम्पैथेटिक कि उसको तकलीफ कितनी हो रही है. ठीक है ना, हम सारे से गुजरे हुए इस पेन से. कौन से कोई ऑथर बने बगैर रिव्यूअर नहीं बन सकता, रिव्यूअर बने बगैर एडिटर नहीं बन सकता. वी हैव बीन थ्रू दिस पेन, और हमें जो दुख और तकलीफ अपने मैन्युस्क्रिप्ट की दफा महसूस हुई थी, जस्ट रिकॉल इट कि यही तकलीफ अब दूसरे को भी फील हो रही है. विद टाइम वी बिकम वाइजर. ऐसे ही होता है, टाइम पे हम बेहतर हो जाते हैं, हर कोई बेहतर हो जाता है. The best thing is whenever we are giving feedback, we should have an eye on the positive things. और ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी ने, अभी मैंने आपसे कुछ कहा सब स्टैंडर्ड है, कुछ का स्टैंडर्ड है, ऐसे ही कहा ना, लेकिन स्टैंडर्ड में भी गलतियां हैं, स्टैंडर्ड में भी ड्रॉबैक्स हैं. और जो मैं इसे सब स्टैंडर्ड कह रही हूँ, यू विल सी कि उसमें भी कुछ पॉजिटिव थिंग्स हैं, उसमें भी कुछ अच्छा काम हुआ हुआ है. तो फर्स्ट वी हैव टू हाईलाइट द पॉजिटिविटी, then we have to be critical, and again we have to be give the positive thing. मैडम की एक जो चीज मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं, एडिटर ऑथर रिलेशनशिप सारा होलिस्टिकली इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे को एक्सप्लेन किया. सिर्फ दो चीजें, बी ऑनेस्ट एंड बी काइंड. अगर आपके काइंडनेस जो है वो एक दिन आपको पे बैक करेगी. सेकंड, ऑनेस्टी. अगर आपको पता है कि जैसे मैडम ने किसी की बात की, आई नो द पर्सन, कि उन्होंने कहा कि मुझे रात के 1 बजे भी मेरा सीनियर या मेरा हेड प्रेशराइज करता है कि ये आपके पास आर्टिकल आया हुआ है और ये सब करे, तो मैं कहती हूँ उनको पता कैसे चला, हाउ ही नोज इट कि आपके पास है. तो आप इनकार कर दे, मेरे पास नहीं है, आपके नोट सारा के पास है. दिस इज द ऑनेस्टी कि आप मुझे, आई नो कि उसकी क्या पोजीशन है, मैं एम्पैथेटिक हूँ उसके साथ, मुझे ये मैं जानती हूँ कि उसको शील्ड करना है. अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ ऑनेस्टी कि आई डोंट वांट हर टू रिव्यू इट एट ऑल. अगर उसके पास वाकई कोई आर्टिकल ऐसा आ गया है जिसपे ऑथर को गेस कर लिया उसने कि ये कमेंट्स इसने लगाए हैं, इसके अलावा कोई नहीं लगा सकता, तो उसको नहीं चाहिए कि उसको रिव्यू करे या उसको एडिट करे. he or she should take help from the colleagues. This is again the part of editor author relationship. अगर ऑथर को पहली बात है हमारा ब्लाइंड पीयर व्यू, हम इस पे अभी फर्दर डिस्कस भी करेंगे, सारी दुनिया ओपन पे चली गई है, हम भी ओपन पे जाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं चीजें ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज है.
अगर कोई नाराज हो गया, कल को वो बोर्ड में बैठा, उसने वहां सिलेक्शन ना हुई, प्रमोशन ना हुई, तो ऑनेस्टी की एक प्राइस पे करनी पड़ जाएगी। तो व्हाई नॉट कि आप अपने आप को उससे डिटैच कर लें फॉर अ लिटिल पीरियड और किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। So that relationship has to be made a little bit flexible, or for a time being, it has to, you have to take shelter for yourself too. Ground realities policies में लिखी नहीं जा सकती, जितनी ground realities we know it ourselves, लेकिन we have to be truthful, honest. तो अगर आपको कहीं पर भी ये लगा एज एडिटर आपकी पोजीशन जो है ये ऑथर के साथ डिफिकल्ट पोजीशन हो जाएगी, try to take a step back and take a help. That is my advice for everyone. Thank you very much, and once again a wonderful session. अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन टाइम हमने कवर किया लॉट ऑफ स्टफ। आज तो हमने वाकई, आपने कल कहा था कि इट वाज लिटिल बिट इजी बिकॉज इट वाज एन ओवरव्यू, और आज जो हमने किया है हम आहिस्ता आहिस्ता वी आर गोइंग इनटू डेप्थ, और इंशाल्लाह आफ्टर 6 मंथ्स जो आज की और उस दिन की इम्प्रूवमेंट होगी, यू कैन सी योर जर्नी योरसेल्फ इंशाल्लाह, और आपके सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, यू कैन गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सारा फॉर अ वंडरफुल सेशन। बहुत जबरदस्त एक एक चीज जो थी क्लैरिटी और थी डेप्थ के साथ उन्होंने बताई है कि अगर कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा था ना, तो नेक्स्ट स्लाइड में यू हैव द आंसर। फिर आपको कोई क्वेश्चन आता था तो अगली स्लाइड पे यू हैव अगेन द आंसर। तो 2-3 दफा तो मैंने भी सोचा कि यस, और यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, राइट? तो ये एज एन एडिटर फर्स्ट यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि यू हैव टू बी रिमेन ऑनेस्ट, काइंड एंड एम्पैथेटिक। ये 3 चीजें, यही सारा रिलेशनशिप है। और कहाँ पर आपका रिलेशनशिप जो है एज ए एडिटर कहीं पर ऐसी पोजीशन में आपको डाल दे तो टेक अ स्टेप बैक, और अपने किसी और कोलीग को जो ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है उसको कहें कि ये आप ले लें। दैट इज व्हाई वी ऑल आर अ टीम, जिसे मैं बार बार कह रही हूँ, हम सब टीम है, और यू विल सी कि हम सब में कोहेरेंस है। डॉक्टर सायरा ने जितनी बातें की, अगर मैं करूंगी मैं भी यही करूंगी। डॉक्टर सायरा ने मेरे कल की हमारे सेशन, अभी तक उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, लेकिन कोई ऐसी बात आपको नहीं लगेगी जो हमारे कहीं पर भी कोई डिस्कनेक्ट हो या आपको ये लगे कि हम इकट्ठे नहीं रहे। एक तो हमने सेशन पूरा इकट्ठा लास्ट टाइम वाला भी किया है, इसके अलावा 2015 से अब तक हम इकट्ठे ही हैं इस जर्नल में भी, एंड इन मेनी प्लेसेस वी आर टुगेदर। इसके बावजूद यू कैन सी द हार्मनी इन आवर टीम। एक हार्मनी आपको फील होगी, नजर आएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट के अगर मैं या नहीं होंगी तो दैट पर्सन कैन फिल ऑल द स्पेस or the gap in my absence. Alhamdulillah. So you have to develop a good team too. Inshallah. Thank you so much.